honor, Professor Deepak Kumar Srivastava, Vice Chairman UGC. Guest of honor, Shri Upendra Rai, Chairman and Managing Director and Editor-in-Chief of Bharat Express News Network. Guest of honor, Dr. Ashok Chauhan Sir, President, Amity Education Group, Founder, Ritaran Balved Education Foundation, and our Director, Dr. S.K. Sareen Sir. We request all the dignitaries to kindly come on the stage. World Liver Day is observed every year on 19th April to spread awareness about liver-related diseases. Liver is the second largest organ and the most complex organ in the body after the brain. Yakrita Sharirasya Pratibhimbam means liver is the reflection of our body. Indeed, liver health determines almost every function in your body. But nowadays, there has been a steep increase in liver damage cases due to alcohol, especially in the young adults. So this Liver Day, we join hands to fight alcohol-related liver diseases. And this is joint initiative of ILBS and Integrated Health and Wellbeing Council. Now, we may please request Director S.K. Sareen Sir to felicitate our guest today. We would like to felicitate our chief guest, Shri Kailash Satyarthi Ji, who is a Nobel Prize winner, Peace Prize winner in 2014. We would like to honor today's guest, Professor Deepak Kumar Srivastava, who is Vice Chairman UGC. Professor Deepak Kumar Srivastava, Vice Chairman UGC. Our guest of honor, Shri Upendra Rai, Chairman and Managing Director and Editor-in-Chief of Bharat Express News Network. We would like to welcome our guest of honor, Dr. Ashok Chauhan, President, Amity Education Group, Founder, Ritaran Balved Education Foundation. Now may I please request Director Sir to kindly present the welcome address. A happy World Liver Day. Keep your liver healthy and keep your body healthy. It is a privilege for a small family of ILBS, कैलाश सत्यार्थी जी और उनके साथ चौहान साहब, श्रीवास्तव साहब, उपेंद्र जी और बहुत सारे सम्मानित लोग हमारे यहाँ आ जाए। थैंक यू ऑल। आई नो कैलाश जी के बहुत सारे आज प्रोग्राम्स थे, मेरे कारण आपने व्यवस्थित कार्यक्रम में समय निकाला। हम लोग वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू कैलाश जी।
मेरे एक बहुत अजीज स्वामी अग्निवेश जो नहीं रहे, उनकी बातों से और उनके विचारों में ये था कि किसी तरह से अल्कोहल का मिशन आगे चले। और वो बात मैंने जब सत्यार्थी साहब से कही, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही सेज आई वुड join this campaign, join this mission. Thank you, Kailash ji, for coming. Between 25 and 39 years, 1.1 billion people are drinking alcohol. 15 से और 39 years के बीच में वर्ल्ड में 1.1 बिलियन पीपल ड्रिंक अल्कोहल। और अल्कोहल से होने वाली डेथ्स बिटवीन 25 and 35 have increased almost by 4-fold. हम लोग सोचते थे अल्कोहल पिएगा, 10-15 साल 50 साल की उम्र में पेशेंट आता था अल्कोहल और लिवर से। आज वर्ल्ड ओवर लगभग 15 से 35, 15 से 40 के बीच में अल्कोहल एंड लिवर से डिजीज हैज बिकम almost 20 times more. The largest number of transplant needs for liver due to alcohol are now between 25 and 35. Alcohol, Europe is considered highest consumption for alcohol in the world. Europe में, फिनलैंड में, स्कैंडिनेवियन थोड़ा ठंड होती है, थोड़ा उनका एनवायरनमेंट है। Alcohol consumption used to be highest, and India is closely reaching to that alcohol consumption. हम लोग 48% admissions are because of alcohol. जो पेशेंट्स आते हैं उनकी एज 30-32 साल, शादी अभी अभी हुई है, वाइफ, छोटे बच्चे हैं, एंड द पेशेंट नीड्स ए ट्रांसप्लांट। डॉक्टर के मन पे इतना असर है कि अगर इस यंग लेडी का लिवर इस आदमी को दे दिया जाए, शायद बच भी जाए, तो क्या वो वापस तो ड्रिंक नहीं करेगा? और अगर करता है ड्रिंक तो वापस फैमिली उतनी ही खराब, और वो छोटा बच्चा और उसकी माँ unhealthy family and a person who needs transplant. तो मैं इसलिए ILBS एक लिवर के बारे में थोड़ा बहुत जो काम करता है और सारी टीम की तरफ से आज सोसाइटी को, आप लोगों को और इतने सारे जो बच्चे आए हैं उन सबको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप आज अनहेल्दी हैं, पर रिमेंबर in the young people 15 years onward the alcohol drinking has increased. I know none of you drinks. सब नहीं करते हैं ना, हाथ खड़े कर दो। कोई भी, I so happy था, जो भी स्कूल के बच्चे आए तो all of you are good, very good, very very good students. Will you all become ambassadors so that none of your friends, your family friends or society people drink? Say yes. All right. So that's what others, and I'm so happy that Ashok Chauhan sahab has joined.
who has been with us for last 3 decades, has been an elder brother for ILBS. He has, and his school and university chains has done so much. I'm indebted to you, Ashok ji. I know you had a meeting till 11 o'clock in the night and you still could come from such a far off distance. Thank you, Amity Group. They made such a unique, school children made a unique health modules. Thank you. We should encourage. I'm also very grateful to Shri Deepak Srivastava Sahab, the Vice Chairman of UGC. We have a mission which, if you give your blessings and the chairman, can we not reach out to all universities in the country? We're not asking for anything. We're just asking awareness to be communicated. People are not aware how soon the liver can damage. And especially if your father, mother has diabetes, blood pressure, high cholesterol, even a small amount, shorter duration can cause severe liver damage because of alcohol. It is a carcinogen, cancer banata hai, or socially accepted worst toxin. I'm thankful to Upenji, a very dear friend for a long time, through him and through the Bharat Express to have got into this program. I'm very thankful to KL Jain Saab, who is a panelist for the session. Through him, Jain Samaj. अपने आप में जैन समाज एक बहुत बड़ा सिंबल है. आपके थ्रू सारे लोग, बच्चे, आपके स्कूल्स, आपके बिरादरी के और बहुत लोगों को, आई एम श्योर आपका मैसेज वैसे भी होगा, पर मैं थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा था. मैं चाह रहा था ऑल्सो प्रभु चावला साहब को धन्यवाद देना, जो बहुत कम निकलते हैं, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स द कंट्री हैज. थैंक यू चावला साहब फॉर जॉइनिंग अस टुडे मॉर्निंग. आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू हेरिटेज स्कूल्स, आवर नेबर्स, and Sunita ji for coming and joining us today for this, and Manit we are missing. With that, to all the August guardians and our partner Kamal, who is from the IHW Council, who has done a lot, and to all the school children, please take this message to your parents and friends. The World Liver Day is actually a symbol that every day is a liver day. If you keep your liver healthy, you will not have diabetes, blood pressure, hypertension, or cancers. It can be prevented. So we have designed a cup. We'll show you sometimes that cup. I would like that cup to be utilized, or a mug to be utilized by you. With this, one more time, welcome and thank you all for joining us. धन्यवाद सर. आज आपकी बातों ने माननीय अब्दुल कलाम सर की याद दिला दी. उन्होंने कहा था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी. Ladies and gentlemen, today we are fortunate to have amongst us Dr. Ashok Chauhan sir, who has been an immensely successful entrepreneur in Europe for over 3 decades. Realized that one could motivate tens and thousands of talented youngsters and give them some global level of professional education while instilling them in a sense of values, becoming global leaders. He is president, Amity Education Group, founder, Ritnan Balved Education Foundation. We request sir to kindly guide the gathering. First of all, I give my blessings to all my students from Amity University, UP, Noida. More than 120 students have come. When I call students from Amity University, just say, yes, sir. Students from Amity University. Great. Now the students, 120 also from Amity 5 schools, say, yes, sir. So this is, sir, a compliment to you that they all come when you invite them. So, Nasreen, when you invite me, I have been many times here. In addition to your Zanoon, obsession,
for liver and hepatitis. The good thing is that I meet a lot of nation builders here. Everybody who is invited, who is present, are a deep-rooted interest in the growth, development of India in every respect, and follow the mission that we have to make India a global superpower. Everybody who's coming over here, all are extremely busy, highly successful, and as Sari Saab told, that they all came because he invites. Sometime I think that we should write a book on Shiv Sarinji. I don't know how, with such love, affection, obsession, he has developed ILBS. Once I had a very close employee of MIT, hepatitis B, and every doctor of the country and globally told him that you will soon have cirrhosis, then we have to do liver transplant, and then we think, I don't know how long you will live. I told, don't give up the hope. I will take you to Dr. Shiv Sarin. I personally brought him Shiv Sarin, and you will not believe it. Nobody believes it. In 9 months, he was given interferon and other treatment, and he was hale and healthy, and today living a very successful life in my group. So, this is the miracle man, Dr. Shiv Sarin. I'm telling you, this is my experience. And I always used to come with this great person, my employee, my friend, and sit with Dr. Sarin when he was treating him, advising him. And somebody just told, I think Prabhu Chawla ji, sir, आपके पास आपसे तो मिलके आदमी वैसे ठीक हो जाता है. So she said, I think I should give a big clap for you. This is हमारे मध्य में हमारे यूजीसी के वाइस चेयरमैन प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं. UGC is changing and navigating the whole education and research. Nobody who can know more than me of the country. And I would say that this role, what UGC is playing, they are incorporating always new rules, new trends, and he will also take care to sometime for the universities also to try to imbibe in the vice chancellors and faculty members the importance of liver. Because my dear students from university, it is a very special message for you. And as Shiv Sarinji told to the students of schools, you take care with your father or mother, just say laughingly, हम लोग शिव सरीन के गए थे, हमने सुना मम्मी पापा इसका कितना नुकसान होता है, तो ये बोतल हटा दूं क्या? तो अगर वाइफ कहेगी तो नहीं हटेगी, हस्बैंड कहेगा तो नहीं हटेगी, पर तुम बच्चे लोग कहोगे तो फादर या मदर बुरा नहीं मानेंगे, इसलिए तुम्हारा आना भी बहुत जरूरी है. So Shiv Sarin, I think this campaign what you're starting, Dr. Kailash Satyarthi ji, we know how busy he is. Sometime I will invite you all to show his film, heart-moving film, what he has shown, how from zero level he started, how he has shown how these poor boys, poor employees are used. I think, Kailash bhai, I think this was something, it moves and shakes your mind, body and soul. And I will show to all my students and all my faculty members, those who are there, because this tells you, Bachpan Bachao Andolan, what does it mean? We have honored him also with the honorary doctorate, which is given to very, very few people globally. And since 30 years, his wife Sumedha ji, and they are my close family members. I always take inspiration from him. इससे समझता हूँ, देखता हूँ, वैसा करने की कोशिश करता हूँ. शिव सरीन जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने इनको आज बुला पाए. और जो भी यहाँ हस्तियाँ बैठी हुई यहाँ पे KL जैन साहब बैठे हुए हैं और हमारे न्यूज़पेपर वाले बैठे हुए हैं. So I think we are so glad to have them all here. And his hall is always jam-packed. So I think we all sitting over here, अगर किसी अच्छे फंक्शन में जाओ, अच्छे काम के लिए जाओ, तो ये पुण्य मिलता है. तो all those who come here, it's a matter of पुण्य.
ऑल दोज आर सिटिंग ओवर हियर, हेरिटेज की प्रिंसिपल बैठी हुई सुनीता जी, हमारे ये बैठे हुए विश्वपति त्रिवेदी जी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट IAS ऑफिसर आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ। तो ये बहुत दिन से मिलना चाह रहे थे, तो वो कहने लगे थे आपसे यहाँ मिलना हो गया, तो मैंने थैंक्स टू शिवसरी जी। सो आई नो मोस्ट ऑफ यू सिटिंग ओवर हियर, आई विल नॉट टेक मोर टाइम, आई विल से दिस इज a great function, my faculty members are coming, those who are here, professors, take care that this presence of your student has some value. I will address them separately at the campus because they are the torch bearer to follow this campaign and this mission of that. If I have not named anybody else, I must tell you the wife of Shiv Sarin ji, Sunita ji. Sunita ji is also very much helping. You know, if a husband can work day and night, neglect the family, then it is the tolerance and understanding of the wife. So I think in the absence of Sunita ji, when you do good job, God take care of your family. The son and daughter of Dr. Shiv Sarin, the son has become one of the most important surgeon in the area. Kis area mein sir? Liver transplant. You know, is it automatic? Is it given to anybody? But God says Shiv Sarin is a godly, saintly person. We took care of his son and the daughter. So I am telling it, all you're coming over here, you are becoming more closer to God, and God will take care of you and your family. प्रभु चावला जी ने कहा कि शिव सरीन ने जब इन्होंने कहा कि चौहान साहब आ रहे हैं, कहते अच्छा वो आ रहे हैं, वो तो बहुत कम जाते हैं, तो इसके लिए मैं कहूंगा कौन कहता है जब शिव सरीन बोला है तो चौहान आते नहीं, तो कौन? इज इट राइट? इतने प्यार से मोहब्बत से बुलाते हैं, तो नोबडी कैन से अमीरा जी सवेरे कहा तुम रात को 11 बजे आए हो, जाओगे? तो मैंने उससे कहा शिव सरीन ने ऑर्डर दिया है तो सवाल नहीं उठता जाने का। तो सर once again compliment, we pray to God for long, healthy, joyful life and all my blessings to everybody. Let's follow this campaign and show to the whole world that Indians are the people, those who understand this. Thank you very much. Thank you, sir. Your words have reminded us of Dr. Babasaheb Ambedkar, who said that I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. Today, we have esteemed presence of our guest of honor, Shri Upendra Rai, Chairman and Managing Director and Editor-in-Chief of Bharat Express News Network. He started his career as a correspondent in the year 1997 with Sahara News Network while pursuing his graduation at University of Lucknow. Later on, he has worked in many media houses and in 2016 established his own media house, the Print Lines Media Group. He has received many national and international awards, including National Excellence Award, World Book of Records, London 2019. We request sir to kindly address the gathering. मंच पर बैठे डॉक्टर एस.के. सरीन साहब, कैलाश सत्यार्थी जी, डॉक्टर अशोक चौहान जी, डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव जी, सभागार में बैठे सम्मानित लोग, आज वर्ल्ड लीवर डे पे मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब ILBS शुरू हुआ था, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेस, मेरी मदर की तबीयत बहुत खराब थी और बहुत सारे डॉक्टरों को मैं दिखा रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि आखिर बीमारी क्या है। तो उस वक्त मेरी बात कई लोगों से चल रही थी, उस बीच में ही अधिकारी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उन्होंने कहा कि तुम ये नंबर लो और मैं फोन करता हूं, डॉक्टर शिव सरीन से बात करो।
डॉक्टर साहब उस टाइम विदेश में थे नहीं, किसी कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, लेकिन बात हुई मेरी और मैं अपनी मदर को ले आया यहाँ, इमरजेंसी में मैंने एडमिट कराया और मेरी मदर यहाँ से ठीक होके गई। तब आईएलबीएस को खुले साल भर भी नहीं हुआ था। उस समय से मैं आईएलबीएस परिवार का हिस्सा हूं और सिर्फ इसलिए हूं कि इस संस्थान के साथ डॉक्टर एस के सरीन जैसी महान पर्सनालिटी जुड़ी हुई है। कल जब मैं अपने ऑफिस में था तो मैंने बोला कि मुझे जाना है तो जरूर कुछ 2 लाइन बोलना भी होगा, तो ये मेरा विषय नहीं है। तो मेरे रिसर्च हेड ने मुझे कुछ छोटे से एक पैरा में डिटेल दी। उसको पढ़ने के बाद मैं भी बहुत चिंतित हुआ कि भारत में करीब 14 करोड़ लोग शराब पीते हैं, 5 अरब लीटर शराब की खपत है हमारे हिंदुस्तान में, और अनुमान है कि अगले साल 2024 समाप्त होते होते ये जो मात्रा है 6.21 अरब लीटर हो जाएगी। जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यूरोप आगे है और मार्जिनली हम लोग अभी थोड़े से कम है, हम लोग लगता है कि यूरोप का जो लिकर कंजम्पशन है उसको हम क्रॉस कर जाएंगे। और चूंकि मैं गांव से आता हूं तो मेरा बचपन गांव में बीता है, मैंने देखा है कि जब हम लोग छोटे थे तो गांव में कुछ चिन्हित लोग थे। जब हम लोग छोटे थे 5, 7, 8 साल, तो ये पता था कि ये फलाने जा रहे हैं, गली से गुजर रहे हैं, ये शराब पीते हैं। लेकिन अब मैं उसी गांव में जाता हूं तो कोई ऐसा घर नहीं जहां का लड़का शराब नहीं पीता और जिस घर में शराब न जाती हो। और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि गांव में शराब पीने का जो प्रतिशत है वो शहरों से ज्यादा है। शहरी आबादी 17% शराब पीती है, तो गांव की आबादी 20% क्रॉस कर चुकी है। जो मैं कह रहा था कि पहले लोग चिन्हित थे कि समाज में कौन सभ्य है, कौन असभ्य है, कौन गुंडा है, कौन नशा करता है, ये उंगलियों पे गिने हुए लोग थे। गांव के बच्चे भी उनको पहचानते थे। लेकिन समय ऐसा बदला है कि अब वो लोग अधिकता में हो गए हैं और ऐसे लोग माइनॉरिटी में हो गए हैं गांव में। पहले हम जब गांव में बारात में जाते थे तो शराब जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। अब गांव की बारातों में शराब एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है और मांग बन गई है। अगर कोई गरीब आदमी है, उसके घर में शादी है और वो शराब पिलाने में सक्षम नहीं है तो उसकी शादी फ्लॉप हो जाती है। मैं ये बातें यहाँ बच्चे बैठे हुए उन लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि इसमें से बहुत सारे बच्चे गांव में पले बढ़े नहीं हैं, शहरों में पल बढ़ रहे हैं। गांव में किशोरावस्था नाम की चीज आज से 30-40 साल पहले होती ही नहीं थी। बच्चा पैदा होता था 7-8 साल में बाप के साथ खेत जाना शुरू कर देता था, और 40 साल पहले, 50 साल पहले करीब बाल विवाह भी था गांव में, जल्दी शादी हो जाती थी। लेकिन शहर में पलने बढ़ने वाले बच्चों के सामने ये जो किशोरावस्था की आयु निकल के आई है, यह एक प्रिविलेज है, यह एक वरदान है कि जो 14 साल से लेके 25 साल के बीच आपको पढ़ाई लिखाई के साथ ये वक्त मिलता है कि बेहद क्रिएटिविटी के साथ अपने करियर को अच्छे से निखार सकें और अच्छे से बना सकें। माँ बाप चूंकि अपने बच्चों को अच्छा होते हुए देखना चाहते हैं, अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन ये बेहद जरूरी भी है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। कल इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल सीएमएस लखनऊ में उसका समापन था, तो वहां भी कुछ मुझे बोलना पड़ा। तो मैंने एक छोटी कहानी सुनाई थी, इससे मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उसी कहानी को सुनाता हूं। एक रात पहले ही मैं जब कुछ पढ़ रहा था तो मुझे ये पता चला कि मांझ इकलौता ऐसा पक्षी है जो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन के जानवरों का शिकार करता है। हालांकि हम लोग देखते हैं कि डिस्कवरी पे और ऐसे भी, लेकिन पढ़ते वक्त मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैं आगे पढ़ा कि आखिर ऐसा इतनी ताकत उसमें कहां से आती है। तो जो मादा बांझ है, जब वो
बच्चा पैदा करती है तो 7 दिन के बाद वाटर 7 दिन के बाद अपने बच्चे को 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक लेके जाती है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हाँ, मदर्स भी हैं, फादर्स भी हैं, सब लोग हैं, कैसे बच्चे को ट्रेन करते हैं। 12 किलोमीटर की ऊंचाई मतलब कि 42,000 फीट के लगभग, जहां पे बाकी सारे पक्षी ऑक्सीजन नहीं ले सकते, उनके फेफड़ों में इतनी ताकत नहीं थी इस ऊंचाई पे जाके वो ऑक्सीजन ले सकें, वो मूर्छित हो जाते हैं या इतनी ऊंचाई तक जा ही नहीं सकते। मादा बाज अपने बच्चे को उस ऊंचाई पे ले जाके छोड़ देती है। बच्चा 9 किलोमीटर तक लगातार गिरता रहता है, तब तक उसके पंख भी नहीं खुलते। जब 3 किलोमीटर ऊपर रहता है तो उसके पंख खुलते हैं, लेकिन वो पंख फड़फड़ा नहीं पाता। उसके बाद जब वो 900 मीटर की ऊंचाई पे आता है तो एक मजबूत पंजा आता है, उस बच्चे को दबोच के फिर उड़ जाता है, वो उसकी माँ होती है। लेकिन ये ट्रेनिंग जो है माँ उसकी कुछ दिनों के लिए देती है और उसके बाद अपना सारा सहारा खींच लेती है। तो आज यहाँ उपस्थित बच्चों से बात करते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अपने मदर से, फादर से सहारा जरूर लीजिए, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होने का हुनर सीखिए आप लोग। और ये बात सबके लिए उपयोगी है। कल क्योंकि चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में बोलने गया था तो एक बात और पढ़ी मैंने जो बड़ी अच्छी लगी, वो यहाँ बच्चे हैं तो शेयर कर देता हूं। साइकोलॉजिस्टों का मानना है कि जब बच्चे स्वस्थ हों, हेल्दी हों, तो उनको खूब प्यार दीजिए, खूब उनको गले लगाइए, खूब उनके साथ खेलिए, खूब वक्त बिताइए। लेकिन जब बच्चा 5 साल से लेकर 10 साल के आयु के बीच में हो या 12 साल तक भी हो, जब वो बीमार पड़े तो उस वक्त उसको उतना ज्यादा अटेंशन मत दीजिए। हमारे यहाँ होता है कि मुझे बड़ी अजीब लगी, फिर मेरा जिज्ञासा पैदा हुई, फिर मैंने उसको पढ़ा, ऐसा क्यों? दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब उस समय जब बच्चा बीमार होता है, अगर सक्षम आप हैं तो नर्स रख दीजिए। उस वक्त में माँ अपने बच्चे को अपने गले से चिपटा के रखना चाहती है, सर में तेल लगाती है, पैर में तेल लगाती है, तमाम तरह से उसकी देखभाल करती है। उसके पीछे उसका इंटेंशन पूरा पूरा पवित्र होता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चे जब माँ बाप का अटेंशन नहीं पाते तो वो अटेंशन पाने के लिए फिर बीमार रहने लगते हैं। और जैसा कि घरों में औरतों के बारे में कहा जाता है कि जब पतिदेव बहुत व्यस्त रहते हैं, अटेंशन नहीं मिलता, तो औरतें भी बीमार होती हैं। माफी चाहता हूं अगर किसी का इमोशन मैंने हर्ट किया हो। तो ऐसी मुझे बड़ा जिज्ञासा हुई, थोड़ा सा मैंने और पढ़ा बच्चों के बारे में कि बच्चों का क्या मनोविज्ञान है। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों को सहयोग दीजिए, लेकिन एक वक्त के बाद बहुत ज्यादा सहयोग देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तमाम अमीर घरों के बच्चे 100 में से 5% ही एक्सेल करते हैं और अपने बाप की विरासत संभालते हैं, नहीं तो नकारा निकल जाते हैं, क्योंकि वो इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पाले जाते हैं, रखे जाते हैं कि फिर उनसे कुछ आगे चुनौती जैसा काम करते नहीं बनता। हेनरी फोर्ड ने अपने बच्चों को वहां के सबसे साधारण स्कूल में भर्ती किया, तो पत्रकारों ने पूछा उनसे कि आपने ऐसा क्यों किया? हेनरी फोर्ड ने कहा कि मैं हेनरी फोर्ड होने से पहले ही जिस स्कूल में मेरे बच्चे जाते हैं उससे थोड़ी दूरी पर मैं जूते पॉलिश किया करता था, वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई है, तो मैं अपने बच्चे को पैदा होते ही हेनरी फोर्ड नहीं बनाना चाहता। और दुनिया भर के बच्चों में 2 गुण बहुत ही सुलभ और सामान्य पाए जाते हैं। एक कि दुनिया के सारे बच्चे बिना बात के खुश रहते हैं और बिना काम के व्यस्त रहते हैं। और मैं ये हमेशा देखता हूं कि जब कोई बहुत मैच्योर होता है, बुद्ध महावीर बनता है, तो वो पलट के बच्चा ही हो जाता है। मैंने हर संत में, हर ऐसे महापुरुष में बाल सुलभ गुण देखे हैं और मैंने अनुभव किया है कि महान बनने का मतलब कि चित्त का सरल हो जाना, सहज हो जाना। हालांकि आज डॉक्टर सरीन साहब ने मुझे वर्ल्ड लिवर डे पे आमंत्रित किया है, लेकिन वर्ल्ड लिवर डे के साथ साथ जो हमारे सामने भावी पीढ़ी बैठी हुई है, हमारे छोटे भाई बहन बैठे हुए हैं, उनके बारे में और
उनके भविष्य के बारे में भी मुझे लगा कि आज बात करना उतना ही जरूरी है। और जो शराब है ये क्यों आकर्षित करती है, इसका भी एक बड़ा मनोविज्ञान है। सिर्फ एक कारण से लोग शराब पीते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं इस पूरी दुनिया में। शराब थोड़े वक्त के लिए आपको एक दूसरा आदमी बना देती है, और वो दूसरा आदमी कौन होता है? वो दूसरा आदमी वो होता है जो जब हम अपनी जिंदगी में हताशा से, निराशा से, जो काम कर नहीं पाते, जो बातें कह नहीं पाते, जो भाव चेतन अवस्था में जी नहीं पाते, शराब पीने के बाद थोड़ा जी लेते हैं। और वो जीने की आदत, वो जीने की चाह जब आपके मन को पकड़ लेती है तो आपका मन हावी होता जाता है, आप छूटते जाते हैं। जो शराब का मनोविज्ञान है, ज्ञानी लोगों ने कहा है कि परमात्मा और आत्मा के बीच एक ही दीवार है, वो है मन। और कबीर ने तो कहा है कि मन टेढ़े टेढ़े क्यों चले। तो मन पर बहुत लोगों ने कुछ कहा, लेकिन ये मन ही है जो हमें शराब छोड़ने नहीं देता। लेकिन जो शराब कोई छोड़ना चाहता है, छोड़ने की जिद करेगा तो जिंदगी में कभी नहीं छोड़ पाएगा। अब छोड़ कैसे पाएगा? सिर्फ एक कारण से कि शराब आपके जीवन में एक पड़ाव है, तो उससे बड़ा पड़ाव बनाइए। और वो बड़ा पड़ाव क्या हो सकता है? आप निकल जाइए 10 किलोमीटर के वॉक के लिए। अगर शराब से लड़ना है तो कुछ बड़े काम करिए। सुबह बैठ जाइए ध्यान पर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। सुबह सुनने लगिए उस ज्ञानी व्यक्ति को जिसको सुनने से आपके मन में थोड़ा तार झनकते हैं, आपके पैर थिरकते हैं और आपके मन आंदोलित होते हैं। अगर आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कभी नहीं छोड़ पाएंगे। अगर छोड़ने के बारे में बार बार सोचते रहें तो छोड़ना उस दिन शुरू होगा जिस दिन आप सिगरेट से बड़ा काम करना शुरू कर दें। शराब उस दिन छूटेगी जिस दिन शराब से बड़ा काम करना शुरू कर दें। समय बहुत कम है, मेरे से बहुत बड़े लोग मंच पर उपस्थित हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Today, we are fortunate to have amongst us our guest of honor, Professor Deepak Kumar Srivastav, sir, Vice Chairman UGC. Professor Deepak Kumar Srivastav ji completed his graduate in 1979 and post-graduation with a gold medal in commerce in 1981. He has 37 years of experience of teaching and research, and he has contribution in management and commerce, focusing on human resource management and labor relations. Sir is here to guide the youth of today. May I please request sir to kindly address the gathering. गुड मॉर्निंग। परमादरणीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी, नोबेल प्राइज विनर, देश का गौरव और गरिमा, मंच पर आसीन डॉक्टर अशोक चौहान जी, प्रेसिडेंट अमेठी एजुकेशन ग्रुप, प्रोफेसर सरीन जी, शिव सरीन जी, डायरेक्टर ILBS, अभी हमारे से पहले आए हुए वक्ता श्री उपेंद्र राय जी, सभी उपस्थित आदरणीय गेस्ट, विशेष रूप से चावला जी, प्रभु चावला जी, जिनका मैं बहुत फैन रहा हूं जब ये आज तक पर आते थे और कई कार्यक्रम मैंने इनके देखे हैं। जब ये मुस्कुराते थे बस खतरा वहीं से शुरू होता था। बहुत मैंने गंभीरता से देखा है, ये हंसे सो फंसे आप। और आज सभी जो यहाँ फैकल्टी, स्टाफ और युवा उपस्थित है, सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। 19 अप्रैल जो आज ये वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया जाता है, मैं एक धार्मिक स्थल का हूं, अयोध्या का,
इसलिए ना तो वहाँ ये सुविधा उपलब्ध थी पीने की उस क्षेत्र में, और ना हमारे घर में ऐसी परंपरा थी। तो मेरे को उसके बारे में ज्ञान नहीं है कोई भी, लेकिन फिर भी जो भी जानकारी है उसके आधार पर मैं कुछ आपसे बात करना चाहूंगा। ऑन ए लाइटर नोट, क्योंकि उपेंद्र राय जी ने कुछ ऐसी बातें कही जिनसे कि थोड़ा मेरे मन में आया कि ऑन ए लाइटर नोट, नॉट एज ए यूजीसी पर्सन, बट एक मूवी मैंने देखी थी हमारी जनरेशन के, हमारी बात के जनरेशन का कुछ लोगों ने देखी होगी, उसका नाम था सत्ते पर सत्ता, जिसमें कि श्री अमिताभ बच्चन जी अमजद खान को समझा रहे हैं कि दारू नहीं पीना चाहिए, इससे लीवर खराब होता है। तो मैं समझता हूँ वो बहुत, ये ब्रांड एम्बेसडर वो मूवी थी जिसमें कि ये बताया गया और कई बार बताया उन्होंने कि शराब पीने से लीवर खराब होता है। तो आज शायद कार्यक्रम उसी पर ही आधारित है। सो आई विल स्पीक ऑन सर्टेन थिंग्स, और मैं आदरणीय सरीन जी को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से जो कुछ भी अवेयरनेस से संबंधित बात होगी उसे तुरंत पूरा किया जाएगा। हम सभी विश्वविद्यालयों को लिखेंगे, एक एडवाइजरी जारी करेंगे, और जैसे ही आप उसका कंटेंट हमें देंगे हम उसे सभी विश्वविद्यालयों को एडवाइजरी देंगे। हम लोगों ने एंटी रैगिंग में इसको इनकॉर्पोरेट किया है, लेकिन हम बहुत ज्यादा एडवाइजरी इसलिए नहीं जारी करते क्योंकि मान करके चलते हैं कि कैंपस में शराब नहीं पी जाती है और इसकी ये जो है यूनिवर्सिटीज की जिम्मेदारी है वो उसको देखने की। फिर भी अगर आवश्यक हुआ तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसके संबंध में एक एडवाइजरी जारी करेगा। The Council on Alcoholism and Drug Dependence and the American Society of Addiction Medicine defines alcoholism as chronic disease in which a person strongly urges drinks that contain alcohol and is unable to control his or her drinking. Alcoholism affects physical and mental health and can cause problems with family, friends, and work. Regular heavy alcohol intake increases the risk of several types of cancer. This is also referred as alcohol dependence. There are several data, राय जी भी बता रहे थे कि ज्यादा प्रयोग हो रहा है अल्कोहल का गांव में। चूंकि मैं टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से भी जुड़ा रहा हूं करीब 25 वर्षों तक, बहुत सारे अध्ययन वहां किए जाते हैं। कुछ मैं डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो नेशनल गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स as on April 2021, India's 5th National Family Health Survey stated that about 18% of women living in rural areas consumed alcohol almost every day. In comparison, 11% of women staying in urban areas consumed alcohol almost every day in India. Of all states, Arunachal Pradesh has the highest proportion of both men, that is 53%, and women 24% who drink alcohol. Has increased by 5.63% since 1990, followed by the age group 15 to 39 with a jump of 5.24%. For the elderly, it has increased 2.88%. Alcohol related, what is the impact on youth? Every generation suffer from alcoholic liver diseases. The number of 25 to 34-year-olds who died annually from alcohol-related liver disease nearly tripled between 1999 and 2016. That is from 259 in 1999 to 767 in 2016. That it is necessary that the Police and Excise Department, Honorable Supreme Court of India, it is reported in the case Bachpan Bachao Andolan versus Union of India and others in 2016, the landmark judgment by
Honorable Justice D.Y. Chandrachud in the petition filed before the Supreme Court under Article 32 of the Constitution by Bachpan Bachao Andolan focus on alarming increase in the use of drugs and alcohol among children in India. The petition has instituted in the public interest for enforcing the fundamental rights of children, particularly those suffering from and involved in substance of the abuse. The court direction is to formulate and implement National Action Plan for children on the issue of drugs, alcohol, and substance abuse among children, wider coverage issues on identification, investigation, recovery, counseling, and rehabilitation. The Government of India there is a scheme for prevention of alcoholism and substance drug abuse, setting up of alcohol and drug de-addiction centers. The Ministry of Social Justice and Empowerment scheme for prevention of alcoholism and substance drugs abuse under National Action Plan for Drug Demand Reduction. There are certain civil society initiatives like in the US. I heard the initiative of ILBS and this initiative of celebrating this an awareness program of this World Liver Day, and I think they have a plan to launch Play Safe campaign today and pledge also. So I wish all the best, and I hope that each and everyone sitting here will be brand ambassador for saving the youth and the society from this kind of problem or evil of the society. Thank you once again for inviting me. Thank you, sir. Thank you for your guidance. Now we would like to play a short video regarding the work that has been done by our chief guest today. So may I please request to run the video. The Nobel Peace Prize for 2014 be awarded to Kailash Satyarthi for the struggle against suppression of young people and children. There is no greater violence than to deny the dreams of our children. I refuse to accept that the laws and constitutions are unable to protect our children. Today is the time for every child to have the right to life. I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be more stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here. Getting a greeting like this is all the reward Kailash Satyarthi needs for freeing these children from a life of slavery. He tries to give these kids the childhood they missed. Do you think these kids see you as a Nobel Peace Prize winner? I don't think they see me as a friend or brother or something like father. I have looked into their frightened and exhausted eyes. I've held their injured bodies and I have felt their open spirits. I refuse to accept that children belonging to certain sections of society are bound to work for others at the cost of their childhood and freedom and education. If the children are exploited, I have been attacked many times in my life. You had a gun to your head. Yeah. This is dangerous work for these kids. Somebody has to pay the cost for freedom. It does not come on plate. So उनको रोना पड़ता है क्योंकि इस अस्पताल में आने वाले लीवर के जो मरीज हैं ट्रांसप्लांटेशन या इस तरह की चीजों के, उनमें लगभग आधे
48% उन्होंने बताया शराब के कारण बीमार होते हैं। मैंने किसी धर्मगुरु को, किसी नेता को ईमानदारी से कहीं ये कहते हुए नहीं सुना कि जब कोई मरीज मरता है, जब कोई भक्त मरते हैं, भले ही अपनी गलतियों से, अपने कर्मों से, तो दिख रहा है उनको रोना पड़ता है। डॉक्टर सरीन, मैं बहुत सम्मान के साथ और भावुकता के साथ ये कहना चाहूंगा कि आप ऐसे हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों से बहुत आगे हैं अपने हृदय से। लेकिन उनका ये सवाल, उनकी ये टिप्पणी उन सब के लिए चुनौती है जो मानवता में भरोसा करते हैं। उन सब के लिए चुनौती है जो दूसरों के दुख में, दर्द में, परेशानी में खुद को इतना शामिल करते हैं कि दूसरों का दुख दर्द उनको अपना लगने लगे और उसे दूर करने की कोशिश वो करने लगते हैं। This is called compassion, the true compassion. When you feel the suffering of others as your own suffering, with a strong drive to alleviate that suffering or pain or problem of others, you are true compassionate. Sarin Sahab, आप true compassionate हैं। और this is something which is lacking in the world. हम लोग सहानुभूति दिखा सकते हैं, दिखाते हैं लोग, वो तो एक आर्ट है। किसी की डेथ हो गई, बेड पर सहानुभूति के साथ कह दिया जाएगा, ओ सॉरी। किसी को चोट लगी, रास्ते में मिला, यू कैन एक्सप्रेस योर सिंपैथी बाय जस्ट सेइंग, मैं आपकी मदद तो करना चाहती हूं, लेकिन अभी मैं जॉब पे जा रही हूं, सॉरी, इट्स सो बैड टू सी यू हियर। बहुत आसान, दिल से भी निकलती है कई बार, और कई बार एक दिखावे के तौर पे भी सिंपैथी प्रकट की जा सकती है। उसके भीतर एम्पैथी है। When you feel the suffering of others as your own suffering, but you don't have drive to change that situation or to solve that suffering, then you become empathetic. संवेदनशील होते हैं आप। तो संवेदनशीलता भी बहुत अच्छी चीज है, सहानुभूति से थोड़ी और गहरी है। लेकिन संवेदनशील व्यक्ति बहुत दिनों तक उस संवेदना को, how you can hold the suffering of so many people, planet, plants, trees, rivers, air, everything is suffering, and we are responsible for that. But when you feel the suffering of all these things as your own suffering, when you cannot hold it forever, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लॉस्ट महसूस करेंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। लेकिन the deeper thing, which is more biological, more neurological, this is the reflection of that deep suffering and deep compassion. क्योंकि आप प्रयास करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस ड्राइव के साथ इकट्ठे हुए हैं कि भाई इतने सारे लोग शराब पी पी के मर रहे हैं या दूसरों को मार रहे हैं, अपनी आत्मा का विनाश कर रहे हैं और समाज का विनाश कर रहे हैं, अपने शरीर का, लीवर का विनाश कर रहे हैं। और अगर 20-22% लोग गांव के हैं और गरीब हैं, उनमें से कई रोजी रोटी की तलाश में शहरों में आ जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं।
लेकिन शराब तो छूटती नहीं है, बल्कि उसकी लत और लग जाती है स्लम्स में रहते हुए। कुछ साल पहले की बात है, हम लोग, बहुत लोग आप जानते होंगे कि ये जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाते हैं, क्योंकि देश में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हर घंटे में 5 बच्चों का बलात्कार होता है या उनके साथ एक बहुत ही क्रूअल सेक्सुअल अब्यूज होता है। एंड दीज आर द रिपोर्टेड केसेस। 5 इस जिस घंटे में हम बैठे हैं वहां ये हो चुका होगा। तो एक बार हमें खबर मिली और मैं एक 14-15 साल की या 13 साल की दुबली पतली सहमी सी बेटी से मिला। एक थाने के अंदर दिल्ली में वो बाहर बैठ के रो रही थी और जिद कर रही थी कि अभी मैंने जो रिपोर्ट दर्ज की है उसे वापस ले लो। पूछताछ से पता लगा कि वो रिपोर्ट उसने अपने पिता के खिलाफ दर्ज की थी। लड़की ने, उस हमारी बेटी ने जो बताया वो शर्मसार कर देने वाला है, और उसका आज की बात के साथ संबंध है। उसने कहा कि मेरे पिता, जब से मैंने होश संभाला है, बहुत शराब पीते हैं। घर का सामान बिक गया, गहने बिक गए, कपड़े बिक गए, भूखों मरने की नौबत आई, लेकिन वो इतने बड़े शराबी हैं कि रोज शराब पीते हैं। मां भी छोड़कर चली गई, लेकिन मैंने कहा पिता है, आखिर मुझे उनके साथ रहना चाहिए। उस लड़की ने जब से होश संभाला, शायद 8-10 साल 12 साल की उम्र से, उसने बताया कि हर रोज मेरे पिता शराब पी के आते थे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे अपने पास बुलाना शुरू कर दिया, अपने पास लिटाना शुरू कर दिया, और जब मैं मना करती थी तो जबरदस्ती करके मुझे अपने साथ सुलाते थे। महीनों गुजर गए, साल गुजर गए, हर रोज वो शराबी अपनी बेटी के साथ, सगी बेटी के साथ बलात्कार करता था। इस लड़की ने कहा, कल रात को मुझे, कल दिन भर से बुखार था, भूखी भी थी मैं, घर में खाने का दाना नहीं था, और मैंने अपने पापा से कहा, पापा प्लीज आज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत बुखार है, मैं भूखी। मैं भूखी थी, पिता के हाथ में शराब की बोतल थी। पीने के बाद उसने मुझे जबरदस्ती लिटाया, मेरे साथ जबरदस्ती फिर से किया। तब मेरी माँ जो अलग रहती थी उसको मैंने कहा, और वो मुझे पुलिस थाने तक लेके आई। परंतु मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि मैंने अपने ही पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज क्यों की। मैं उसे वापस लेना चाहती। कितनी कसम कसम में थी, कितनी बेटियों के साथ, कितने बेटों के साथ। हो सकता है वो आपके ना हो, लेकिन जो सेक्सुअल अब्यूज होता है उसको करने वाले शराबी। इससे भी पुरानी बात है, दिल्ली में हम लोगों का एक छोटा सा ऑफिस था, उसके बाहर एक प्रेस करने वाला बैठता था। उम्र उसकी मुश्किल से 30 साल की होगी, 28-30 साल की होगी।
उसकी पत्नी उससे 2-4 साल छोटी थी। वो भी बिहार के किसी गांव से आया था, शराबी था, गरीब आदमी, पत्नी की रोज पिटाई करता था। जब भी वो रोकने की कोशिश करती थी पिटाई करता था। बीमार रहने लगा। वो लड़की, उसकी पत्नी जब प्रेस करती थी तो मैंने 1-2 बार उससे पूछा कि तुम्हारे पति नहीं दिख रहे बेटे, क्या क्या हुआ है? बोले उनको खून आता है मुंह में से, खून की उल्टी हुई, वो लीवर सिरोसिस था, बाद में डायग्नोसिस हुआ। तो यहां पता नहीं था कि डॉक्टर शरीन वार वार और पुश्तैनी जमीन का टुकड़ा सब कुछ बेच दिया है। ये जो 20-22% गांव में लोग शराब पीते हैं, इनकी कहानी है, ये असलियत है। ये एक एक डेटा इस तरह के घुट घुट कर मरने वाले लोगों की निशानी है। और जब ये यहां अस्पताल में आके मरते हैं तो डॉक्टर शरीन की आंखों में आंसू आते हैं, वो रोते हैं। डॉक्टर शरीन की तारीफ करने से काम नहीं चलेगा। बहुत लोग उनके उपकृत होंगे जिनके परिवार का उन्होंने इलाज किया, दोस्तों का इलाज किया। आज वो एक आह्वान के साथ यहां इकट्ठे हुए हैं कि हमें लिवर के बहाने ही सही, लेकिन इस बुराई को जो हमारे शरीर को, आत्मा को, समाज को, सबको बर्बाद कर देती है, इसे खत्म करना है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। मैं डॉक्टर होता तो निश्चित तौर पर मैं यहां आता और आपके आंसू पहुंचता अपने हाथों से, लेकिन मैं जिस हैसियत में हूं, मैं आपको वायदा करता हूं कि कम से कम इस मुद्दे पर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बच्चों से खासकर, बच्चों से मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पिछले 40-50 साल में यही काम करता हूं, नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ। भारत में नहीं बल्कि 30 साल से तो मैं दुनिया के 125 देशों में काम करता हूं, युवकों के साथ। अफ्रीका में मैं देखता हूं, लैटिन अमेरिकी देशों में देखता हूं कि किस तरह ये नौजवानों में शराबखोरी बढ़ रही है, और उसका दुष्परिणाम भी देखता हूं। वेश्यावृत्ति बढ़ रही है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बढ़ रहा है। शराब पी के जो वेब, ये जो डार्क नेट है, ये खोलते हैं लोग, शराब पी के खोलते हैं। मैंने इसको बहुत गहराई से देखा है डॉक्टर साहब, और वो डिमांड करते हैं चाइल्ड पोर्न मटेरियल की, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मटेरियल की। ये बहुत बहुत ही बड़ा स्कैंडल है, और इसके लिए कोई नैतिक जवाब नहीं है। व्यापारिक जवाब हो सकता है कि भाई भारत में 4 लाख करोड़ रुपया शराब से अर्न किया जाता है, सरकार के पास आता है, सरकारों के पास आता है, लेकिन इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? अगर दुनिया सिर्फ रुपयों के आधार पर ही चल रही हो, और उस दुनिया में इतने लोग उसका फायदा तो नहीं उठा रहे हैं, तो वहां हम देखते हैं, सब जगह देखते हैं कि हालत नौजवानों के साथ हो रही है। लेकिन बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में काम करते वक्त दिल्ली में, देश में, भारत में हम 650 गांवों में बाल मित्र बनाने का काम करते हैं। बाल मित्र गांव, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज। और अक्सर हमारे पास हमारी बेटियां, हमारे बेटे जब फोन करके कहते हैं कि भाई साहब आज एक खुशी की बात है, हमने कुछ बच्चों को बाल मजदूरी से हटा के स्कूल में दाखिल करा दिया। आज खुशी की बात है कि हमारे मिड डे मील में कुछ गड़बड़ होती थी, खाना अच्छा नहीं दिया जाता था, हमने उसको ठीक करा दिया। आज खुशी की बात है
कि हमारे यहाँ अंग्रेजी और विज्ञान का टीचर आ गया, जो पहले नहीं था, क्योंकि हमने जो बाल पंचायत है, बाल पंचायत ने वो हासिल कर लिया, युवाओं ने हासिल कर लिया। और ऐसे बेटे बेटियां भारत में, उन्हें भारत में ही नहीं बल्कि उन्हें दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बच्चों के लिए जो पुरस्कार मिलते हैं, चिल्ड्रंस पीस प्राइज वगैरह। एक लड़की पायल, जिसने बाल विवाह रुकवाया और उसके साथ साथ शराबखोरी रुकवाई अपने गांव में, वो एक आइकन बन गई पूरे इलाके की। राजस्थान में सरकार ने उसे एम्बेसडर बना दिया और उसको सम्मानित किया गया। उसी मंच पर एक साथ दो भारतीय लोग बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड लेने गए थे। उसमें से एक प्रधानमंत्री मोदी थे और एक पायल थी। तो जब ये बच्चे इन कहानियों के साथ एक और कहानी सुनाते हैं, भाई साहब कहते हैं बच्चे मुझे बहुत सालों से, मेरी उम्र कितनी बढ़ जाए लेकिन मैं 10 साल के बच्चे का भी भाई साहब ही हूं, 11 साल का होऊंगा मैं, ये मान के चलते हैं। वो भाई साहब 1-2 साल बड़े हैं हमसे। तो जब ये कई बच्चे कहते हैं कि भाई साहब मेरे पिता शराब पीते थे और सब कुछ बर्बाद कर देते थे, तो जब से गांव में बाल पंचायत बनी मुझे लगा कि सबसे पहले मैं अपनी पिता की शराब छुड़वाऊंगी। तो बहुत कोशिश की, 1-2 थप्पड़ मार दिए उन्होंने मुझे, पहले मां को थप्पड़ मारते रहते थे। तो मैंने फैसला किया कि अब मैं अनशन करूंगी, उपवास करूंगी। तो 1 आध दिन तक तो सबने मजाक समझा। वो बोली कि मैंने दिन भर खाना नहीं खाया, दूसरे दिन भी खाना नहीं खाया। दूसरे दिन पिता को थोड़ी चिंता हुई, तीसरे दिन भी नहीं खाया तो मां भी साथ में बैठ गई। फिर मेरा भाई और मेरी बहन भी बैठे नहीं, वो लोग धरना देकर, लेकिन वो अपना अपना काम करते रहे बिना कुछ खाए पिए। और अंत में 5वें दिन जब हम 3 लोग घर के बीमार पड़ने लगे तो पिता आके मेरे पैर में गिर गया और बोला, बेटी तूने मुझे रास्ता दिखा दिया, आज के बाद में शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाऊं। ऐसी 100 कहानियां सुना सकता हूं मैं, 100 कहानियां नाम लेकर, बल्कि 200, 300, 500 सुना सकता हूं, जो हमारे चाइल्ड फ्रेंडली विलेज में बच्चों ने अपने पिताओं की, बड़े भाइयों की, किसी की शराब छुड़वाई। और भी काम किए, बाल मजदूरी, बाल विवाह रुकवाए। तो आपसे पूछता हूं, इसमें लिखा हुआ है एक चीज, ये जो मेरे हाथ में कागज आया, 5-6 चीजें लिखी हैं, प्लेज। एक प्लेज ये है कि यहां से लौटने के बाद आप कम से कम 10 लोगों को ये संदेश देंगे, सिंपल संदेश, कि अगर आप शराब पियोगे पापा तो आपका लीवर खराब हो जाएगा, चाचा लीवर खराब हो जाएगा, भाई लीवर खराब हो जाएगा, शराब छोड़ दीजिए। 10 लोगों को, फूफा को, मामा को, भाई को, बहन को, किसी को जो शराब पी रहा है। आप में से कुछ लोग पीएंगे जरूर। बच्चों की बात मैंने इसलिए की कि उनके अंदर वो नैतिक ताकत है जो बड़ों से ज्यादा है। बच्चों के अंदर जो ईमानदारी है, सच्चाई है, वो बड़ों से ज्यादा है, इसलिए बड़े ज्यादा प्रभावशाली नहीं होते, बच्चों के मुकाबले बच्चे ज्यादा प्रभावशाली। मैंने कहा कि केवल शिव शरीर जी की तारीफ कर देने से ये अभियान सफल होने वाला नहीं। आज की मीटिंग है, कार्यक्रम है, सब लोग चले जाएंगे ताली बजा के खुश होकर। मैं पूछता हूं ईमानदारी से, पूरे संकल्प के साथ आप कहिए, आप में से कितने लोग हैं, जैसा मैंने वादा किया कि मुझसे इस विषय में जो भी हो पड़ेगा मैं आपके आंसू पोंछूंगा। कितने लोग हैं जो उनके आंसू नहीं देना चाहते शिव शरीर जी के? 10 लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए, 10 लोगों तक।
10 लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए और फैसला हो जाएगा कि हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे भाई साहब, आपके माध्यम से तो लाखों लोगों तक आज ही पहुंचना सूचना पहुंचेगी, आपके माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचेगी। प्रभु चावला जी बैठे हैं और लोग बैठे हैं, आपके माध्यम से भी पहुंच सकती है, क्योंकि आपके पास वो मोबाइल फोन है ना छोटा सा, भेज दो वो संदेश जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। मोबाइल फोन में व्हाट्सएप है ना, कई लोगों के पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है ना। किस किस के पास व्हाट्सएप है? हाथ ऊपर करो। है? और फेसबुक? वो फेसबुक ऐसे फेस के लिए तो नहीं है जो नशे में धूप पड़ के इधर उधर पड़ा हो सड़क पर, कुत्ते उसका मुंह चाट रहे हो, उठा के लोग ले जा रहे हो म्युनिसिपैलिटी वाले। कौन सा? एक तो जैन पब्लिक स्कूल है। जैन साहब आप बैठे हैं, एमईटी इंटरनेशनल की तो मैं कह चुका हूं, अभी कहूंगा जोर शोर से। एमईटी के तो 3-4 बच्चे मेरे पास अभी आए थे परसों नरसों, वो बुलिंग के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो एक इंटरव्यू करने आए थे मेरा। तो काफी वो अच्छे अच्छे काम आप लोग कर रहे हैं और आप लोग भी कर ही रहे होंगे। तो जिन जिन स्कूलों के आप लोग बच्चे अगर इतने धीरे से बोलोगे, खासकर एमईटी वाले तो धीरे से बोलेंगे, तो आप हमारे भाई चौहान जी को कमजोर करेंगे, उनकी आवाज को। आप इस आंदोलन में शामिल हैं, देखिए आपकी वजह से लोग बहुत तेज नारा लगा रहे हैं, और यूनिवर्सिटी वाले भी हैं। मैं आप शामिल हैं शराबबंदी के लिए, आप लोगों तक सूचना पहुंचाएंगे। कितने बच्चे ईमानदारी से बताओ, हाथ लगा के अपने दिल पे हिम्मत करके अपने पिताजी से आज शाम को कहेंगे, पापा अगर आप शराब पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? कह सकते हो? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, मैं देखता हूं कितने बच्चे कह सकते हैं। ऊपर भी उठ रहे हैं ना, ऊपर भी तो बैठे हैं। कह दोगे? अपने पिताजी से आज कहोगे जो शराब पीते हैं, वो जो नहीं पीते उनसे भी कह दो कि पीना मत भविष्य में। तो ये फैलेगी खबर। हमारे यहाँ वेद में कहा है, अग्नि नाम अग्नि समिध्यते, एक अग्नि के कण से अग्नि फैलती रहती है। हम लोग तो रोज यज्ञ करते हैं, आपके घर में होता है, मेरे घर में भी होता है रोज हवन। तो हम जानते हैं कि कैसे अग्नि के कण फैलते हैं। तो जो आखिरी बात मुझे कहनी है वो ये है कि इनमें आप लोग जो बैठे हैं, कई लोगों ने हाथ उठाए हैं, मुझे पता नहीं कि भारत में कुछ बुलाकर आपके आपस में घृणा की भाषा छोड़कर शराब खत्म करने के नाम पर एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये काम डॉक्टर लोग करें, मैं भी इसमें तैयार हूं, ये भी एक संभावना है। प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, पत्रकार 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 तो मेरे बहुत सारे मित्र पत्रकार पीते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, जब जागे तब सवेरा। तो पत्रकार भी अगर ये बोलना शुरू करें अपने चैनल्स पर, कहीं इस पर लिखें, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 48% ऑफ लिवर पेशेंट्स हु आर एडमिटेड हियर आर अल्कोहलिक, ये छोटी सी खबर है, लेकिन इस खबर को पहुंचाने से बहुत चेतना जगेगी स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में। एक बार आप भाई साहब अपने विश्वविद्यालय में एक समागम कर लीजिए, सम्मेलन कर लीजिए, जिसमें 20, 25, 50 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को बुला लें, ये इसमें मदद कर दें, आप दोनों मिलकर कर लें। वाइस चांसलर लोग यही कसम खा के जाएं कि हम सरीन जी के साथ हैं। सरीन जी को हम चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं, नेता बना रहे हैं, लेकिन इस अभियान में, इस यज्ञ में हम लोग सब अपनी अपनी आहुति देंगे, तो हम स्वास्थ्य का, भाईचारे का, चरित्र का, अच्छाई का प्रकाश पूरे देश में फैला पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत धन्यवाद।
Dear all, ILBS in association with Integrated Health and Wellbeing Council are excited to launch Project Play Safe, that is protecting liver against alcohol in youth, enhancing societal and familial awareness in ALD. A groundbreaking campaign aimed at raising awareness about prevention, early detection, and management of alcohol-related liver diseases. May we request Shri Kamal Narayan ji, CEO IHWC, to join us for the launch of this campaign through the pledge. I request Dr. Mohit Varshne, consultant psychiatry at ILBS, who has been actively involved in alcohol de-addiction programs at ILBS and also co-member of the project lead, that is liver education and counseling on alcohol-related liver diseases. We request him to kindly guide us through the pledge. I request all the dignitaries on the dais to take the pledge. Yes, sir. सर आपने तो कागज पहुंचाया, आपने सोचा मुझे रेफरेंस देने के लिए पहुंचाया है। देखो ऐसा है कि ये प्लेस तो मैंने करा ली और मैंने यहाँ इनसे कहा अपने लोगों से कि फोटो खींच लो जिस जिसने हाथ ऊपर किए हैं, अगर वो इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे इस अभियान को तो मैं उनके दरवाजे पे जाके घंटी बजा सकता हूँ सरीन जी के साथ। तो इसलिए करना सबको है, लेकिन ये प्लेज भी ले लेते हैं, लेकिन दैट शुड नॉट बी जस्ट ए रेटोरिक, दैट शुड नॉट बी जस्ट ए कस्टमरी। व्हेन यू टेक ए प्लेज इट मस्ट गो इनसाइड एंड टर्न आउट टू बी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल रिजॉल्व। एक जिम्मेवारी, एक नैतिक जिम्मेवारी के साथ प्लेज लीजिए, नहीं तो हमारे यहाँ पर घरों से, मंदिरों से, शादियों में भी प्लेज लेते हैं लोग और संसदों में भी प्लेज लेते हैं लोग, लेकिन उस प्लेज का क्या होता है मजाक हम सब जानते हैं। तो प्लेज अगर लेते हो तो पूरे भीतर से ईमानदारी से संकल्प के साथ लीजिए। शब्दों का भी असर होता है, धीरे धीरे होगा, लेकिन प्लेज लेते हैं अपन लोग। आई प्लेज टू, मेरे नाम, अपने नाम के साथ बोलिए, आई कैलाश सत्यार्थी प्लेज टू about ill effect of alcohol in youth. I pledge to protect our youth from alcohol associated liver diseases. I pledge to increase awareness in families and society for early identification and treatment for alcohol abuse in youth. I pledge to help in developing effective policies for preventing alcohol abuse in youth. I pledge to take the message to all, at least 10 more people, and maintain the chain. Thank you. 18 हिंदी में तो मैंने कराई थी, हाथ भी उठा दी, आपने भी तो उठाया था सरदार जी। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच ऐसी हस्तियां हैं जिनका हम सम्मान करेंगे, जो सामाजिक कार्यों में अग्रणी हैं, युवाओं के लिए आदर्श है एवं समाज में जागरूकता लाने का कार्य करते हैं। It is an honor to felicitate such social leaders amongst us. We request Shri Satyarthi ji to felicitate such young leaders. We have Shri Anil Rajput, Chairperson, Association of Chambers of Commerce and Industry of India, National CSR Council, President, ITC Corporate Affairs. He has been involved in the health initiatives by ITC since many years and definitely has been a real icon for these activities. We would like to felicitate Shri Anil Rajput, sir.
We now request Shri Satyati ji to felicitate. We now request Shri Satyati ji to felicitate Dr. Ashok Chauhan, sir, President, Amity Education Group, founder, Ritanand Balved Education Foundation. He has a long-term association with ILBS and its activities regarding hepatitis awareness and various other programs. Amity schools have participated actively in all our programs, and definitely their students have launched their own activities for awareness against hepatitis as well. क्या है कॉफी के लिए यस और अल्कोहल के लिए नो। तो मेरी पत्नी मुझे कॉफी पीने से मना कर देती है ज्यादा, तो मैं एक कप दिखा तो उनको कॉफी भरो। अल्कोहल तो मैंने जिंदगी में कभी छुआ नहीं, पीने की भी बात है। I think all my students We would now request sir to felicitate Shri K.L. Jain ji, who is a noted industrialist and pillar of Jain Samaj, who believes that nothing is more powerful and prevailing than reinventing oneself against a world of change. He has been actively participating in social reforms among youth and other philanthropic activities as well. Shri K.L. Jain ji. We would now like to felicitate Shri Prabhu Chawla sir, Editor Director, the New Indian Express and the Sunday Standard, our very own face of Seedhi Baat. Sir has been involved in various social activities and awareness activities through media, print, or through the audiovisual media as well. Shri Prabhu Chawla ji. Today, we would like to felicitate B.B. Rewari ji, who is Regional Advisor HHS, WHO Southeast Asia region. Sir is not available in India today, so we will be presenting him this award in absentia. We would like to call upon Ms. Akanksha Bansal, who has been actively involved in various ILBS initiatives like Project ECO, Prakash, LEAD, for a significant contribution for the social causes associated with awareness among the various school students as well as the youth population. Dhanyavad Mahoday. Thank you, sir. Dear all, ILBS has been blessed to have our first Chancellor, late Shri APJ Abdul Kalam sir. We would like to hear a few words that he had said when he visited ILBS, and we are indeed fortunate to have received his guidance and words of appreciation as well. You know, when I entered in ILBS to participate in the foundation day, first foundation day, I observed something I thought of sharing with you. Number one, the ILBS building smiled.
Then I entered into a lot of students and doctors were standing. All of them smiled. So I thought it's a fantastic thing in a hospital, in a research center, a medical institution. Everybody smiles. And then I entered into the patients, the liver patients. They were also smiling. Then I went into dialysis area and then pediatric area. Everyone smiled, shook my hand. Now, when an medical institution smiles, it means compassion smiles. Medical doctor, medical student has got two qualities, medicine and compassion. Medicine always we learn, but compassion we don't learn. But I was very happy to see this ILBS has got a unique quality of smiling. That is indication that you are the institution famous for compassion also, medicine and compassion. So God bless you. This is same what Kailash ji had said. He did not know what Dr. Kalam had said, but he exactly amplified the same thing. Thank you. Thank you, sir. Now we shall have a panel discussion on saving India's youth from alcohol-associated liver diseases, a socio-regulatory preventive approach. For this, we have our moderator, Shri Prabhu Chawla ji, who is editorial director, the New Indian Express and the Sunday Standard. May I request sir to kindly join us on stage, please. We request our panelist, Shri K.L. Jain, noted industrialist and pillar of Jain Samaj, to kindly join us on stage. We also request Mrs. Sanita Swaraj, Principal, Heritage School, to kindly join us for the panel discussion. नमस्ते सभी को। मैं वापस चाहता हूँ। We shall begin with our panel discussion, sir. Over to our host, Shri Prabhu Chawla ji. नमस्कार। ये मॉडरेशन का काम मेरे को 78 ईयर की उम्र में दे दिया गया है। डॉक्टर सरीन साहब, आई एम 78 year old now and I've done my journalism, whatever I wanted to do. First, I must thank Dr. Sareen for this kind of initiative. I think, where is he? I can't see him. नहीं है वो। आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? आ रही है ना आवाज आपको? अच्छा, ठीक है।
आप चले गए हैं. First of all, I must thank Dr. Singh for inviting me here to moderate this session. As my colleague is here, he said we are not expert in this subject. I don't know anything about liver diseases at all. But of late, I have some problem in the liver, so I've been consulting Dr. Singh. He has not found so far anything serious in my liver. But I know Dr. Singh for the last 40 years when he was in Nalanda Medical College, and he invited me for a lecture when I was India Today editor. When Dr. Singh called, as Dr. Chauhan says, सरीन साहब बुलाएं, शिव सरीन बुलाएं और कोई नहीं जाए, ये हो नहीं सकता डॉक्टर चौहान. तो मैं भी उन्होंने बुलाया तो हम चले आए. What is to be moderated here? Because I heard all the distinguished people here. For example, Dr. Chauhan spoke very well. My colleagues spoke very well. Stories के बारे में बात की, विद्यार्थी साहब ने भी बताया सब कुछ. पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या हम इसको रोक पाएंगे? Are we capable or successful anywhere in stopping this liquor menace in the country? शराब का जो अत्याचार हम लोगों पर हो रहा है, उसको क्या हम रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे? हम क्या करेंगे? कस्में खाएंगे, सब कुछ कस्में वादे सब किया, सब कुछ गाना सुना होगा आपने. क्या हम रोक पाएंगे इसको? इसको रोक पाने की स्थिति में हम लोग हैं कि नहीं है? अनिल राजपूत यहाँ बैठे हैं, ITC के बड़े कॉर्पोरेट डायरेक्टर हैं, और जितने यूथ हमारे ये बैठे हैं, इनके आइकॉन जितने भी हैं, चाहे आप फिल्म स्टार देख लीजिए, उनकी लाइफस्टाइल क्या है सबको पता है, फिर भी उनको फॉलो करते हैं हम. अगर उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो शराब कभी छूटेगी नहीं हम लोगों की. समस्या सोशल है. अभी कहा किसी ने कि 4 लाख करोड़ का ये रेवेन्यू जो है शराब से आता है. अगर इंडस्ट्री को देखें तो $20 बिलियन की शराब की इंडस्ट्री इंडिया है. $20 बिलियन, यानी कि 1,60,000 करोड़ की शराब हिंदुस्तान के अंदर हर साल बिकती है. 1,60,000 की शराब बिकेगी और वो बढ़ती चली जा रही है. आंकड़े देखें, किसी ने अभी फिक्र दी थी मेरे को, हिंदुस्तान यूरोप से आगे बढ़ चुका है. 2005 में पर कैपिटा कंजम्पशन शराब के हिंदुस्तान के अंदर 2.5 लीटर थी, आज 7 लीटर है. जो फिगर अवेलेबल है, जो मार्केट में बिकती है. जब हिंदुस्तान के शराब की बात करते हैं लोग, बिकने वाली शराब तो हमारे को कम नुकसान पहुंचाती है, जो नहीं बिकती है वो लिवर को खराब करती है. उस बात को बोल रहा है नहीं किसी, उसको कैसे रोके? कि जितने भी गरीब डॉक्टर साहब के यहाँ आते होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नकली शराब बिकती है, उसकी वजह से लिवर खराब होते हैं. जितने लोग बच्चों जिनकी घटनाएं बताई गई हैं, ये सोशल प्रॉब्लम भी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, मेडिकल प्रॉब्लम भी है. कितने बार लोग यहाँ पर बैठे हुए कि शराब रोकने के लिए, अगर देखो अखबार का क्या है शराब के बारे में कि आप उसका प्रचार नहीं कर सकते. हम पत्रकार लोग बैठे हैं, शराब वाले कहीं भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, एक ऐसा रूल है. और तो आप देखते हैं शराब के एडवर्टाइजमेंट आते किसी इनडायरेक्ट से. हर शराब वाला पानी बनाने लग गया है. पानी मिलता नहीं उसका बाजार के अंदर कोई भी, पानी के नाम से ब्रांड को प्रमोट करते हैं वो लोग. तो ये सब जो है मिली जुली भगत जिसके अंदर है, जिसको शराब को प्रचार करने की जो रेवेन्यू का एक साधन है. और आपको ये भी पता है कि जीएसटी शराब जो है जीएसटी में शामिल नहीं है. क्यों शामिल नहीं है? कि हर स्टेट गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से उसके ऊपर टैक्स लगाने की छूट है. आज दिल्ली के अंदर शराब कांड के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली का बंद है और चीफ मिनिस्टर की इंक्वायरी हो रही है. उसका कारण क्या है कि शराब में कहीं ना कहीं सीबीआई को, जब बाकी लोगों को लगता है कि फायदा होता है, 100 करोड़ दे दिया, 200 करोड़ दे दिया, इस तरह की बातें चलती रहती है. तो समस्या हमारे को कैसे टैकल करनी है? टैकल ये नहीं कि आप शराब पीने के आप कसम खा लेंगे हम शराब नहीं पिएंगे, पर शराब की बिक्री सारे वर्ल्ड के अंदर बढ़ती चली है. डिफेंस इक्विपमेंट है, यूक्रेन वॉर चल रहा है, जैसे जैसे डिफेंस को आप कहते हैं शांति रखिए देश के अंदर, सिद्धार्थी जी को प्राइज मिल गया नोबेल प्राइज के लिए, परंतु पीस की बजाय वार ज्यादा होता है, हथियार ज्यादा बिकते हैं. आज हिंदू वर्ल्ड के अंदर $7 बिलियन के हथियार हर रोज बिक जाते हैं क्योंकि वार होना है. तो शराब भी उसी ऐसी चीज है, जितना आप इसके ऊपर हल्ला मचाते हैं, शराब की प्रोडक्शन क्या कम हुई है? नहीं हुई है, ना होगी. तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? कि यूनिवर्सिटी के अंदर आप चले जाएंगे, कुछ भी बात कर लेंगे, पुलिस वालों से बात कर लीजिए कैसे रुकते हैं शराब को. बच्चे यहाँ हमारे बैठे हैं, इनके घर के अंदर कई पेरेंट्स पीते हैं शराब, नहीं पीते हैं.
जैसे आप ट्रैफिक पुलिस का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि एक फादर गाड़ी चला रहे थे, रेड लाइट के साथ जंप कर लिए, बच्चे ने कहा पापा रेड लाइट क्यों जंप कर रहे हैं। मेरे घर के अंदर माली है, उसके 4 बच्चे हैं, वो मरते मरते बचा, मैंने उसकी शराब से बनाने की कोशिश की। तो जब मैं सवाल उठाता हूँ, मॉडरेशन की बात करता हूँ, क्या इन लोगों के पास जो बैठे डॉक्टर चौहान जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट किए हैं, हिंदुस्तान का एग्जाम्पल खड़ा कर दिया कि वो बाहर से यहाँ आकर के सेटल किया उन्होंने, और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया, एक एग्जाम्पल है हिंदुस्तान के लिए। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि शराब क्या एक सामाजिक समस्या है या आर्थिक समस्या भी है? क्या आप बड़े बड़े मल्टीनेशनल से लड़ने जा रहे हैं? क्या हमारे में कैपेसिटी है कि बच्चों के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से इन मल्टीनेशनल के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं? या हम पुलिस वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं, जो पुलिस वाले कच्ची शराब अपने इलाके में बेच सकते हैं? तो उसके लिए आपका कुछ सुझाव है, बताइए मेरे को। प्रभु चावला जी, जो सब विद्वान व्यक्तियों ने कहा, वर्दी स्पीकर्स ने कहा, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। और जो भी यहाँ पे उपस्थित हुए उनको मैं नमन करता हूँ। और स्टूडेंट्स को 120 स्टूडेंट्स फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी, 120 फ्रॉम दी 5 स्कूल्स ऑफ एमिटी एंड देयर टीचर्स, मैं उनको ब्लेसिंग देता हूँ। एंड आई थिंक दैट इज माय कमेंट एट द मोमेंट। नहीं, आप, मैंने जो सवाल पूछा है, क्या मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। जैन साहब, आप बताइए, आप जैन समाज से डील करते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। टाइम की वजह से उसके ऊपर काफी बोला जा चुका है, तो और बड़े बड़े विद्वान का भी आप पूछोगे तो मेरा इतना ही काफी है कि आप तो इतना बड़ी यूनिवर्सिटी खड़े, आप बहुत कुछ कर सकते हैं चौहान साहब, आप अंडर एस्टिमेट मत करिए अपने आप को। आप जो कहोगे, श्री सरीन जी कहेंगे, कल्याण सिन्हा, मैं तो उनका एक तरह से पूर्णतया से सम्मान करता हूँ। वो सब करा जाएगा, सब करा जाएगा, पर इस वक्त टाइम की शॉर्टेज की वजह से औरों का मैं सुन लूं, मेरा इतना ही क्या। प्रभु जी, आप तो मेरे भाई लगते हो, समझते हो, तो इतना जो मैंने कहा वो बिल्कुल सब लोग कह चुके हैं। एंड मैं सहमत हूँ जो भी आपने कहा, और मेरी तरफ से पूर्ण या पर्याप्त रहेगा। कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आते हैं सवेरे 8 बजे घर से निकल के, 7:30 बजे निकल के आए हैं, तो दिस शोज द कमिटमेंट ऑफ माई सेल्फ and all my 2 lakh students in the country and 18 campuses. They are all committed. I will show them all this whole program. Brother Dargan, please ensure that this whole program is given to all 12 universities and 18 campuses, because this is one of the most important program. Please, प्रभु जी, पूरा दिखाया जाएगा, करा जाएगा, मैं कटिबद्ध हूँ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। क्या साहब, आप इतनी अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो लोग अच्छा काम करते हैं, उनके प्रिंसिपल तो बहुत अच्छे हैं। आपको लगता है कि शराब की बिक्री कैसे रोकी है? जब तक शराब, कच्ची शराब और पक्की शराब दोनों बिकेगी नहीं, तब तक आपसे कह रहा हूं मैं कि एज ए कम्युनिटी, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, बिग कम्युनिटी, यू आर डूइंग गुड वर्क, देयर प्रिंसिपल आर गुड, लिव एंड लेट लिव, इस तरह का प्रिंसिपल है सब, आपका अच्छा सब व्यवहार है। तो आपको लगता नहीं कि शराब जो है, लिवर डिजीज की बात तो सामने आती है, ये तब आती है जब शराब आपके अंदर जाती है। सवाल ये कि पेट की बात है, कि पेट के अंदर, मैंने जैसे शराब, किसी ने बात की कि अभी ये मेरे को बोल रहे थे राय साहब कि शराब छोड़ना बहुत मुश्किल है, छोड़ने के लिए चाहिए। मैं अपनी घटना देना चाहता हूँ कि कॉलेज में जब मैं गरीब परिवार से था, मिडिल क्लास फैमिली से था, छोटी फैमिली से था, कॉलेज में था, शराब पी नहीं सकता था, परंतु मेरे दोस्त ऐसे बन गए तो शराबी थे, उनके पैसा था, तो मैंने शराब की आदत पड़ गई मेरे को। शराब की आदत पड़ने के बाद मैं भी लगभग एक आधी बोतल रम की पी जाता था जब कॉलेज में था। जब कॉलेज के बाद मैं जाकर के जर्नलिज्म में आया तो मैंने फैसला किया शराब नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पी चलाऊंगा। कारण क्या था उसका? ये नहीं कि मैं शराब छोड़ना मेरा पेट खराब हो गया था, इसलिए कहा कि मेरे को कहा जाता था कि पत्रकारों को शराब पिला दीजिए, कुछ भी लिखवा लीजिए। तो मैंने उस दिन जब जर्नलिज्म ज्वाइन किया 78 के से लेकर के आज तक शराब नहीं पी है, वो इस कारण से मैंने शराब छोड़ दी, ना कि इसलिए कुछ और हो सकता था। तो पत्रकारों की बदनामी हो रही थी, तो इसलिए पत्रकार शराब पीते हैं, सारे के सारे 90% शराब पीते हैं, अभी भी पीते हैं। उनकी रात को जब थक जाते हैं बेचारे, काम करते हैं, लिखते रहते हैं, ये नहीं कि उनकी आदत है, परंतु एक इमेज बन गई थी पत्रकार की, पत्रकारों को शराब पिला करके कुछ भी लिखवा सकते हैं, जो सच नहीं है। पर मैं आपसे पूछूं, एज ए कम्युनिटी, शराब का प्रचार रोकना सबसे पहले, हालांकि एडवर्टीजमेंट कोई नहीं आता, फिर भी सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव बिजनेस, सबसे ज्यादा बिजनेस स्कूलों के पास शराब की दुकानें खुल जाती हैं। तो आपको लगता है ऐसा कौन से स्टेप ले सकते हैं कम्युनिटी वाइज, जो कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि शराब को बिकना कम हो जाए? धन्यवाद चावला जी। जैनों के अंदर तो ये
हालांकि ये तो नहीं, थोड़ी बुराई जनों के अंदर भी आने लग गई है आजकल, फिर भी एज ए होल कम्युनिटी देखें तो जैन लोग इस बुरी आदत से काफी हद तक बचे हुए हैं। पूरे बचे हुए तो नहीं रहे आजकल, पर काफी हद तक बचे हुए हैं। हमारे आचार्य भगवंत, हमारे साधुगण कोई किसी चीज का प्रचार करते हैं तो नशाबंदी, नशा, घर में नशा नहीं होना चाहिए। जिसके घर में खास करके हमारे साधु लोग जो है, जहाँ शराब का प्रचार होता है वहां से भिक्षा नहीं लेते। ये बड़ी 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 मुश्किल हो जाती है उनके लिए, जब हमारे साधु हमारे घर भिक्षा नहीं लेंगे। तो आज पूरी हमारे आचार्य महाश्रमण जी जो पूरी 55 किलोमीटर पद यात्रा करके इस समय अनुयातन लगे हुए हैं, तो उनका पहला उद्देश्य है नशा मुक्ति। कहीं भी गांव में जाते हैं तो उस दिन पहले गांव वाले काफी लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर, तो उनसे नशाबंदी का प्रचार वो काफी करवाते हैं, तो उनसे प्लेस देते हैं, संकल्प लेते हैं जिनकी कि मैं नशा नहीं करूंगा। मैं एक बात चाहता था कहना, शराब क्यों पीता है आदमी, इसका बड़ा कारण यह आता है कि दिखावा होता है कि तू आदमी है क्या, छोटा बच्चा ही अभी तक। जब छोटे बच्चे जब दिल्ली नए नए आए थे तो हम शराब नहीं पीते थे, तो लोग बोलते बच्चा है अभी। ये जो इंस्टिंक्ट है लोगों को शराब पिलाने के लिए, वो बच्चे से मैनली बनने के लिए शराब पीना चाहता है। मैं भी जब दिल्ली आया तो 17 साल के मेरे बच्चा ही आया था, लगभग यंग आदमी आया था, तो हमारे घर में शराब नहीं पिया थी। मेरा सारा माहौल जो था, जो हमारे मित्र लोग थे, हमारे पेड़ के लोग थे, वो सब शराब पीते थे। उसमें मैंने एक बढ़िया काम किया कि अपने मन के अंदर कमजोर हुआ था कि आज पार्टी में जा रहा हूं तो शराब मैं भी पी के देखता हूं, शराब मैं भी पी के देखता हूं। मैं उस दिन कमजोर था, पर क्योंकि मैंने प्रचार बड़ा कर रखा था कि मैं शराब नहीं पीता, उस पार्टी में गया तो एक आदमी मेरे लिए पैक लेके आया, मैं उसको लेने ही वाला था, इतने पड़ोसी आए। तेरा दिमाग खराब हुआ है, किसको ऑफर कर रहा है, किसको ऑफर कर रहा है, ये तो साधु आदमी। देखिए आपकी जो इमेज है, उस दिन जो मेरी इमेज ने मुझे बचाया, मैं आज तक उस अपनी इमेज बचाने के लिए शराब को हाथ नहीं लगा सका। कई बार हमें अपने को बचाने के लिए जो चीज नहीं करनी, वो पूरे समाज के अंदर जोर से प्रचारित करके रखिए कि आपको नहीं पीनी, क्योंकि जब पियोगे बाद में तो आपको बड़ी शर्म आएगी, लोग नहीं पीने देंगे आपको। मैं बचा इसके कारण से मैं बचा इसके कारण से। एक मैं बात बताना चाहता हूँ, पिताजी कोई जमाने में शराब नहीं पीते थे, जर्दा खाते थे। ये बात लोगों के जानने के लिए, जर्दा बहुत खाते थे, छोटे गांव में रहते थे। बारात में गए, जर्दा काफी लेके गए, तो वहां पर जर्दा मिला नहीं, तो शाम को वो लोग काफी उनका जर्दा खा गए, उनके पास जर्दा था नहीं, तो शाम को सारी रात सो नहीं सके वो। उनके मन में उस दिन एक बात आई कि मैंने अपने मजे के लिए जर्दा खाया था, ये मजा मेरा ले रहा है, ये मजा मेरा ले रहा है, गुलामी तो हमने किसी की करी नहीं। इतना जर्दा खाते थे वो, सुबह शाम से जर्दा खाते थे। उसके बाद संकल्प किया कि आज के बाद जर्दा नहीं खाना। तो मैंने अपनी उम्र में जर्दा खाते देखा नहीं। तो कई बार क्या होता है, हम थोड़ी थोड़ी करके छोड़ेंगे तो छूटती नहीं है। कभी छोड़ने की आदत पड़ भी गई है तो आप एकदम छोड़ दीजिए, कम छूटने वाली पोजीशन होती नहीं है। मेरे पिताजी का मैं देखा कि उन्होंने मेरे जिंदगी में, मैंने कभी उनको वो जर्दा खाते दोबारा देखा नहीं। तो शराब के लिए बड़ी बात तो ये आती है कि सोशल जो ये आती है कि इसके बिना हमारा सम्मान नहीं होगा, लोग हम छोटा बोलेंगे, लोग हमको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हमारी पार्टी में नहीं आएंगे। उस भय से हम शराब पी लेते हैं। वो भय मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, पर मेरे बच्चे भी, नई पीढ़ी के बच्चे भी मेरे को फॉलो करते हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात। डॉक्टर साहब, आप थे नहीं, मैंने शुरू किया कि आपको आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर स्टार्टिंग दिस काइंड ऑफ कैंपेन, क्योंकि बहुत लिवर के साथ जुड़ा हुआ है। अल्कोहलिज्म पता था, पर मेरे को, मैं उनको बता रहा था कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी, पर डॉक्टर सिंह को मैं 40 साल से जानता हूँ, जब पहली बार भाषण के लिए बुलाया था इन्होंने मेरे को, और अभी लीवर की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो मैंने आप ही को कंसल्ट किया। एंड क्वेश्चन इज कि शराब जो है बिजनेस है एक किस्म से, क्योंकि आप सोशल से, डॉक्टर का एंगल से देख रहे हैं। 1,60,000 करोड़ की शराब हिंदुस्तान में बिकती है रोज, हर महीने, हर साल। 4 लाख का रेवेन्यू कम है, बहुत ज्यादा आता है। वो तो ऑफिशियल फिगर है जो शराब बेची जाती है दुकानों के माध्यम से, जो जिससे आपके पास लेबर के लोग आते हैं, बहुत सारे गरीब लोग आते हैं, मिडिल क्लास के लोग आते हैं। उसमें शराब वो होती है जो ऑफिशियली नहीं बिकती, ज्यादातर शराब वो होती है। क्योंकि यू आर फाइटिंग दिस काइंड ऑफ मैनेज,
आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप सर हम लोगों को बताएंगे कि एडवांस साइंस क्या है, साइन क्या होते हैं कभी जब लीवर से पहले, उसके लिए प्रिवेंशन मेंशन क्या ले सकते हैं, कोई आप इंडिकेशन देंगे? मेरे जैसे आदमी को पता भी नहीं था कि क्या हो सकता है इस तरह का। जैसे आपने टेस्ट मेरे को कराए, मैं वॉक करता हूँ रोज, मेरे को आज तक भगवान की टच में बुखार भी नहीं हुआ, 70 साल का मैं देखा भी नहीं कभी हुआ बुखार मेरे को, परंतु फिर आई वॉज लिटिल वरिड। So I would, as a doctor, would like to know what do you think you suggest to the parents and students and teachers to watch for warning signals? शराब से आए। तो खाली भारत की समस्या वैसी नहीं, वर्ल्ड ओवर। और सिम्टम्स क्या है, जैसे आपके पास गाड़ी है तो आप उसमें हवा चेक कराएंगे, भाई आगे 32 है, पीछे 34 36 है, पर बॉडी का कभी भी आप अपना चेकअप नहीं कराएंगे। तो पहली बात तो आप रेड लाइट जंप कर रहे हैं, फिर आपने कोई टेस्ट नहीं किए। तो लिवर एक इतना स्ट्रांग ऑर्गन है कि बाद में जब बहुत एडवांस हो जाए तभी खराबी आती है। तो इसलिए लक्षण आने की स्टेज तक ना जाएं, ये देख लें कि रेड लाइट जंप करते हर बार खतरा है, हर बार टक्कर हो सकती है, हर बार मर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो आपने स्टार्ट है कि ये वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, बट नॉर्मली वी हैव फाउंड कि यूथ जो है उसके बाद डेवलप होना शुरू हो जाता है, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो दीपक जी से मैं पूछना चाहूंगा कि वेदर टीचर्स चले गए शायद वहाँ बैठे ना आप, यूजीसी से आप ही है ना, आप ही से पूछूंगा, सॉरी, कि व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स are made to make aware. Like most of the teachers think, I know it, but it's difficult. Ki what you don't practice, you can preach. But what you practice, you can't preach that. Otherwise, they call that. So most of the teachers do drink. But problem होता है यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर, आपने काफी अच्छी बातें कही वहां पर। What do you think? What can be done to make teachers as part of the campaign, social campaign? कि शराब जो है कि कॉलेज कैंपसेस में ज्यादा पी जाती है आजकल, वहां पर सारा कुछ होता है, लिबर्टी के नाम है, आजकल तो फैशन है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तो शराब पीना भी मेरी चॉइस है, एक किस्म के फैशनेबल हो गया है ये। तो सिचुएशन में यूजीसी के सामने ये एक ट्रेजेडी है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस के साथ लड़कों को कैसे समझाया कि फ्रीडम ऑफ चॉइस इज डेंजरस टू योर फ्रीडम टू लिव। You are engaging, there's a conflict between freedom to have a healthy life and freedom to have some kind of a food which you want to eat and drink. Are you preparing teachers or preparing any kind of action plan where you can have this balance of both? धन्यवाद प्रभु जी, आपका प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। अभी एक जब गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे कई लोग बोल रहे थे तो उसमें एक बात आई थी कि टीचर की बात सभी लोग मानते हैं, टीचर हमारा रोल मॉडल होता है, और अगर टीचर किसी चीज के लिए कहता है तो विद्यार्थी उसका ज्यादा सुनते हैं। हम सभी यूनिवर्सिटीज में कोड ऑफ कंडक्ट है, सभी टीचर्स के लिए उनको फॉलो करना पड़ता है, और निश्चित रूप से उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स उनको फॉलो करते हैं और टीचर्स को रोल मॉडल बनना चाहिए। इस तरीके की मैं समझता हूँ विश्वविद्यालयों में टीचर्स अल्कोहल इन पब्लिक डोमेन पीते हैं, ये शायद मेरे अभी संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलूंगा। एक कॉन्सेप्ट होता है प्लेजर एंड पेन। तो दो कारणों से लोग शराब पीते हैं, या तो गम को गलत करने के लिए पीते हैं या खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए पीते हैं। बीच में एक कैटेगरी और आ गई, सोशल ड्रिंकर, जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप कितनी बार आप जंप करते हैं। तो कई लोग कोई 50 बार जंप करता है, लेकिन कुछ लोग 1 या 2 जंप करते हैं। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कई बार देखा प्रभु जी कि किसी डिस्कशन में अगर मैं जाता हूँ, फॉरेन में गया या इंडिया में गया, वो
तो वो जो छोटा ग्रुप है वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं कई बार कह देता था कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक ले लूंगा या इसकी जगह पर मैं जूस ले लूंगा, लेकिन मेरी एक्सेप्टेंस बनती नहीं। वो कहते हैं साहब एक से एक पैक तो एक तो छोटा सा तो आप ले लीजिए। मैंने कहा वो पॉसिबल नहीं है। तो एक समावेशी समाज को बनाने के लिए, अभी राय साहब भी कह रहे थे कि वो शादी फ्लॉप है, अगर अगर पिलाया नहीं तो शादी फ्लॉप है ये। तो ये समाज में एक संदेश इस समय जा रहा है, युवा के बीच में जा रहा है। और अभी आपने बताया भी, डेटा भी है कि महिलाएं भी पीने लगी हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से अब घर में रोकने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों पी रहे वहां पर, तो वो ज्यादा पी रहे। तो वो एक जो समाज का एक जो दायरा है उसमें नई परिभाषाएं आ रही हैं। लेकिन मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो इसके बारे में एक प्रण कर लें कि वो पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने देखा हॉस्टल्स में बहुत तरीके की समस्याएं आती हैं। हमारे कई इंस्टीट्यूट में जब मैं था वहां पर रात में छापा पड़ता था, एज ए वार्डन हम लोग जाते थे, तो बहुत सारी अल्कोहल की बॉटल्स और ये सब मिलती थी। तो कई टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज ये समाज में जो ये जो प्लेजर और पेन का कॉन्सेप्ट जो बढ़ता जा रहा है, इसको कहीं न कहीं भागवत गीता में या गीता में अर्जुन को जब उपदेश दे रहे थे कृष्ण जी, तो एक उन्होंने बात बताई है, स्थिर प्रज्ञ बुद्धि। स्थिर प्रज्ञ बुद्धि व्यक्ति वो है जो कि पेन और प्लेजर दोनों में समान व्यवहार करता है। जब तक मनुष्य बहुत दुखी हो गया तो दुख को कंट्रोल नहीं कर पाया तो पी लिया, बहुत खुशी हो गया तो बहुत खुश होकर के भी वो पी लिया। वो जब तक व्यक्ति अपने दुख और सुख को के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं करेगा, स्थिर प्रज्ञ बुद्धि नहीं होगा, तब तक वो इस समस्या से जूझता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। महिलाओं के बारे में उठाया, मैडम आपके साथ बैठी हैं कि जिम्मेवारी क्या है। एक तो डॉक्टर बताता है कि आप बीमार हो जाएंगे, टीचर कहेगा कि अच्छी बात नहीं है। अब जब महिलाओं के प्रति ये देखते हैं कि फैशनेबल होता जा रहा है, क्योंकि मैं भी कभी कभी शाम को जाता हूँ किसी पार्टी में, अब कम जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ दिन ब दिन, पिछले अगर 10 साल पहले अगर 100 लोगों की पार्टी है तो 5 महिलाएं पीती होंगी, आजकल 25 या 30 पी रही हैं। महिला एक मॉरल फैक्टर है, माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, सब कुछ जिम्मेवारी उनके ऊपर होती है। तो आप जब बैठी हैं, आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए चैलेंज नहीं है कि किस तरह से अल्कोहलिज्म जो बढ़ता जा रहा है बच्चों को ही समझा सकती है, तो आप उसके लिए क्या सोचती है कि कर सकते हैं हम महिलाएं लोग मिलकर के, सब लोग क्या कर रही है, क्या कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया, आपने सवाल शुरू किया और मैं घबरा गई। So I have a quick question from everybody sitting here. कितनों ने चमकती हुई दुकानें देखी हैं आस पड़ोस में, जहां पर शराब बिकती है और रात को तो नजरें इस तरह से चुंधिया जाती है उन चमकदार दुकानों को देख के? कैन आई प्लीज हैव रेज ऑफ हैंड्स? हम सब ने देखी है, और खासकर दिल्ली एनसीआर में तो भरमार है उसकी। मैं यहाँ पर महिलाओं की अगर बात करूं, जितने स्कूल्स हैं हमारे देश में, आई थिंक एजुकेशन इज टोटली डोमिनेटेड बाय वुमेन। और अगर हमारी पढ़ाई, हमारी एजुकेशन बहुत बढ़िया हो रही होती तो शायद ये आंकड़े इतने ऊपर नहीं गए होते आज। सो आई रियली पर्सनली फील दैट I'm running a school. I've been in Heritage for 10 years now. और मुझे लगता है कि नर्सरी से लेके और 12वीं तक जब ये बच्चे पास आउट होते हैं स्कूल से, 15 साल they'll be with you. तो 15 साल में अगर उनको हम ये ना सिखा पाए कि ये जो दुकानें दिख रही हैं और ये जो चकाचौंध है, इनसे आपको कैसे बचना है, तो हमने अपना काम सही नहीं किया। आई थिंक एज एन एजुकेटर हम लोगों को जो हमारा करिकुलम है उसमें लेके आना है। हर दिन
ये बात करनी है कि वो जो रेड लाइट है वो हर दिन स्किप नहीं करनी है, हर दिन हम बदल सकते हैं, पूरे परिवार को बदल सकते हैं. सो माय बिगेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द वुमेन हियर दैट यू आर द चेंज मेकर, यू कैन ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन द एंटायर कंट्री. थैंक यू. Thank you very much. But it's a very tall order because every woman has to fight their husband and son and whatnot. But important role is played by the media these days. The media is dependent more on advertisement and everything and all. तो राय साहब बैठे हैं, इन्होंने चैनल शुरू किया है. मैंने उनसे पूछा कि मीडिया क्या रोल प्ले करते हैं शराबबंदी पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, और क्या हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. कि प्रॉब्लम ये है कि हम सब लोग 90% पीते हैं रात के टाइम पीते हैं. जब जाकर के जो नौकरी करने जाते हैं तो आधे से ज्यादा जर्नलिस्ट बैठ के पीट के लिख रहे होते हैं. एक मेरे साथ एक एडिटर काम करता था जिसको मैंने रखा था. रात को जब उसको तब तक शराब नहीं मिलती थी वो स्टोरी नहीं लिख पाता था. अभी भी वही चीज है. अब प्रेस क्लब में चले जाइए शाम को आपको, क्यों मीडिया के सामने सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से शराबबंदी को इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको अवेयर किया जाए. और काफी सारे जर्नलिस्ट पिछले 10-12 सालों के, मैं नाम नहीं दूंगा, जो लीवर सिरोसिस से मरे हैं, जिनकी डेथ हुई है, और कईयों को हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया, बचाने की कोशिश की, बेचारे मर गए. तो आपको लगता नहीं है मीडिया जर्नलिस्ट कि इसके अंदर हम लोग रोल कुछ प्ले करते हैं, या हमारी कंपल्शन है कि हमारे को नहीं कर पाएंगे, कि बिजनेस इतना बड़ा है मल्टीनेशनल्स का कि आप इनके खिलाफ लड़ाई लड़ नहीं सकते. हेलो, बहुत सही बात कही आपने. आप हमारे कैरियर में हम लोगों ने आपको देख के सीखा है, बड़े हुए हैं. अब मल्टीनेशनल की बात आपने कही तो एक एग्जांपल दूंगा. इसी दिल्ली में जो शराब की जो पॉलिसी बनी, जिस पर इंक्वायरी चल रही है, फ्रेंच कंपनी है जिसके एक बड़े एग्जीक्यूटिव को ईडी ने ऑलमोस्ट गिरफ्तार ही कर लिया था, और फ्रेंच गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया उसमें. लेकिन चूंकि ये सरकार मजबूत इरादों वाली सरकार है, तो खैर उस कंपनी के सीईओ को तो बख्श दिया, लेकिन एक जनरल मैनेजर स्केपगोट दिया गया. नाम नहीं ले रहा हूं कंपनी का, एग्जीक्यूटिव का. तो ये बिजनेस और धंधा बहुत बड़ा है, और देखिए बाजार ही चीजों को तय करता है आज के डेट में. हमें लगता है कि हम तय करते हैं. ये जो विज्ञापन का, एडवर्टाइजिंग का इतना बड़ा खेल चलता है. एक छोटा एग्जांपल दूंगा कि बच्चों के मन पे कैसे असर आता है. पहले एक विज्ञापन आता था माजा का, जिसमें परी आती थी और समाज आती थी, और बच्चों को माजा की बोतल को एडवर्टाइज करने के लिए बहुत अच्छा है वो एडवर्टीजमेंट बना था. अब माजा का बोतल के एडवर्टीजमेंट कहीं कैटरीना कैफ कर रहे हैं, और अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर हैं जो अब कर रहे हैं. पहले की बात बता रहा हूँ, ये आप समझिए कि साल 2000 के आसपास. तो 4 दशहरी आम बच्चे के सामने रख दीजिए. अब दशहरी आम की कोई ब्रांडिंग मार्केटिंग तो करता नहीं कोई बड़ा स्टार, लेकिन असली तो दशहरी है. और एक माजा की बोतल रख दीजिए बच्चे के सामने, बच्चा दशहरी आम को साइड करेगा, माजा की बोतल उठा लेगा. ये है एडवर्टीजमेंट का, और ये है बाजार की ताकत, पावर. मीडिया के लोगों का रोल बहुत ही अहम हो सकता है इस पूरी चीज में. एक, लोगों को अवेयर करने के लिए, और दूसरा, अवेयरनेस के साथ साथ जैसे उन मीडिया के चुने हुए कुछ लोगों में मैं भी हूं, जिसने प्रेस क्लब में जाके कभी शराब को हाथ नहीं लगाया. हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि हाँ मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है, टेस्ट किया है मैंने, लेकिन मुझे उसका स्वाद इतना घटिया लगा कि मैंने ये सोचा कि इसको लोग पीते कैसे हैं, इसमें क्या रस, क्या मजा है. तो लेकिन अब जो लोग एडिक्ट हो जाते हैं वो इसके बिना रह नहीं पाते. और मैंने अपने जीवन में, जैसे प्रभु सर ने बोला कि बहुत सारे हमारे कोलिग्स हैं जो एडिक्ट हो चुके हैं, और सर का भी बहुत लंबा जीवन रहा है. आज सर ने 78 बता के तो मुझे बिल्कुल डिप्रेशन में डाल दिया, और आज उन्होंने टोका भी है. अगली मुलाकात में इनकी स्ट्रोक को मैं ठीक भी कर दूंगा. तो 78 में इतना फिट हैंडसम आदमी तो कोई मीडिया इंडस्ट्री में होगा ही नहीं. तो जो अवेयरनेस की बात है वो ऐसे हो सकती है कि मीडिया का जो रीच है, जो लोगों तक पहुंच है, कमाल की है. लेकिन चूंकि कंपल्शन है कि मीडिया भी एक बिजनेस, धीरे धीरे डाउनग्रेड की तरफ चलते गए. या यूं कहें कि जो स्कूलों में हम नैतिक शिक्षा की किताब पढ़ते थे, या नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, अब वो किताबें गायब हो गई. जैसे मुझे याद है कि 3री क्लास तक, 4थी क्लास तक मैंने नैतिक शिक्षा का कोर्स पढ़ा,
उसके बाद वो नैतिक शिक्षा की किताब धीरे धीरे गायब हो गई। खैर गायब हुई तो अच्छा भी है, क्योंकि जो चीज हटा दी जाती है, मान लिया जाता है कि समाज मैच्योर हो गया, टारगेट अचीव हो गया, इसलिए अब चलो इस चीज को हटाओ। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि शराब का मनोविज्ञान क्या है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई क्या करता था कि रात भर घूम करके तारकोल जो है लोगों की खिड़कियों पे फेंक देता था, और दूसरा भाई सवेरे निकलता था फेरी लगाते हुए कि किसी को खिड़की साफ करवाना है, शीशा साफ करवाना है। धंधा बड़ा मैच्योर था, बड़ा परिपूर्ण ठीक से चल रहा था। एक बिजनेस पैदा करता था और एक उसको ग्रैब कर लेता था। तो जो शराब का मनोविज्ञान है, जो मैं समझता हूं कि जैसे बचपन में हम लोग स्कूल में थे तो सिखाया डराया जाता था कि सिगरेट पियोगे तो पाप हो जाएगा, नरक में सड़ोगे, और माँ बाप का डर तो रहता ही था। अब मान लीजिए लड़का सिगरेट पिया तो वो बहुत चौकन्ना रहता था, किसी ने देख तो नहीं लिया, घर आए तो किसी ने पिताजी को शिकायत तो नहीं कर दी, कहीं पिताजी आते ही पीटना तो चालू नहीं कर देंगे, अब वो डरा हुआ है। ठीक वैसे ही शराब है। अब जब उसके सभ्यता दो काम करवाती है, एक अहंकार पैदा करती है, दूसरा जो है अपराध करवाती है। अब उसके मन में अपराध भाव हमने बचपन में ही बिठा दिया है। और दूसरी तरफ कि मान लीजिए उसको सिगरेट पीने का मौका मिला और उसने सिगरेट को फेंक दिया, और उसके मन में ये भाव आया कि मैंने आज दुनिया का सबसे महान काम कर दिया। वो थोड़ा अकड़ के घर आता है और उसको लगता है कि जो स्थापित चीजें हैं उससे मैंने अपना तालमेल बिठाया, मैंने उसको ऑनर किया, फॉलो किया, और मैंने सिगरेट और शराब को हाथ नहीं लगाया। मेरा ये मानना है कि देखिए, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी एक कॉम्प्लेक्स है और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी एक कॉम्प्लेक्स है, दोनों हैं बीमारियां। अहंकार से कभी सिगरेट को हाथ से खिसका देना, मतलब अहंकार से भर जाना, ये भी स्थिति ठीक नहीं है, और सिगरेट पीना भी स्थिति ठीक नहीं है। तो आखिर आदमी करे क्या? एक ही चीज है कि हमारे जीवन में जो रचनात्मक पहलू हैं या बड़ा मूल्य क्या है, वो हमें अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को बताना है और समझाना है। बड़ा मूल्य सिगरेट पीना या सिगरेट को छोड़ देना नहीं है। बड़ा मूल्य ये है कि हम अपने काम में, हम अपनी चीजों को, अपने जीवन को इतना प्यार करें कि उसके सामने सिगरेट पीना और छोड़ना दोनों बहुत बौना लगे, बहुत छोटा लगे। ये बताना है और यही समझाना है अपने बच्चों को, अपनी नई सी पीढ़ी। बात बोलना चाह रही हूँ। 10 साल पहले मैंने जब ज्वाइन किया था ये स्कूल, तो यहाँ पर एक वाइन शॉप थी रोड के पास, और मैंने तय कर लिया था कि इसको हटाना है। मुझे बहुत कहा गया कि बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी का है, ऑल ऑफ दैट। टुडे 2 years back that wine shop is गांव में तो हम लोगों को जो है शारीरिक व्यायाम की जो है एक व्यायामशाला जो स्कूल में होती थी, और एक गेम टीचर होते थे जो हम लोगों को पीटी करा स्कूल में होती थी, और एक गेम टीचर होते थे जो हम लोगों को पीटी कराते थे। क्वेश्चन ले प्लीज, या यू प्लीज। माइक देना उनको जरा। शराब की प्रोडक्शन शराब की प्रोडक्शन बढ़ रही है और स्टेट इसको एनकरेज कर रही है अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ये इतनी शराब बढ़ती रहेगी तो ये किस काम आएगी? ये कोई टॉयलेट क्लीनर कर रही है? हाँ प्लीज। सो सर, आपका प्रश्न ये है कि ये शराब की दुकानें, तो वो हमारा जो है ना, मुर्गी पहले आई या अंडा। सो द थिंग इज दैट अगर हम जो अवेयरनेस यहाँ पर हो रही है, और हम अपने शिक्षा संस्थान में अगर हमारे बच्चे इतने अवेयर होंगे तो ये दुकानें अपने आप बंद होती चली जाएंगी। सो इफ वी focus on creating awareness, which ILBS is doing, हम सब 10 लोगों से कहेंगे और वो आगे 10 और लाखों तक जब ये पहुंचेगा, करोड़ों तक पहुंचेगा, तो ये दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। सर थैंक यू।
One more question we take because already too much. Since this is the major source of earning for all governments, जो मर्जी कर ले ये प्रोडक्शन कम नहीं होगी. तो हमने अपने अगर नेक्स्ट जनरेशन को इससे बचाना है तो हमारे यूजीसी वाले कुछ ऐसा लिटरेचर प्रिंट करें और उनको बुक्स में कन्वर्ट करके बच्चों तक पढ़ने के लिए दे कि कितने लोग मरे हैं, कितने स्टोरीज बनी हैं, कितने हमारे कितने लोग नुकसान में आते हैं. अगर ये बच्चे बार बार पढ़ेंगे शायद उनके जमीर में ये आ जाए कि क्या हम अपने घर को बचा सकते हैं या हम आगे अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम आगे अब कुछ बचे रहेंगे. मैं नहीं पीता. और दूसरा, हम लेडीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर सकते. उनके ऊपर ऑलरेडी पूरी फैमिली को हैंडल करने का पहले ही बहुत बड़ा काम है. हम बाहर की चीजें तो उनके ऊपर नहीं डालें. समझ गया मैं. आपका कहना है कि यूजीसी वाले आपकी लेडीज के काम ये चीज नहीं है. ये जमीर हमने सबने उठाना है. हमने सब बच्चों के दिल में ये डालना है कि ये चीज खराब है, आपने रोकनी है, हर हालत में रोकनी है. और ये स्कूल्स के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू किया है. सेकेंडली, हमको अब लेट अस नॉट मीट ओवर अ ड्रिंक. लेट अस से यार चाय के लिए कब मिलते हो, कुछ तो चेंज करो यार, स्लोगन चेंज करो. चलिए हो गया ना आपकी बात, हो गया. अच्छा, थैंक यू शुक्रिया वेरी मच. Thank you, sir. शॉर्ट. अभी मेरी बात समझ में एक ऐसी आई आ रही है ओके कि हम लोग बच्चों को जो मना करना चाहते हैं, कोई बड़ी एज आने के बाद 10 साल के बाद 12-13 साल के बाद चाहते हैं कहना उनको भी शराब नहीं पीनी चाहिए. फिर मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे जब छोटे होते हैं नर्सरी से लेकर के प्राइमरी तक, उस समय जो टीचर उन टीचरों की बात जो सुनते हैं वो सारी उम्र उनके दिमाग में रहती है. और हम लोग उस समय कोई शराब के अवगुण बताते ही नहीं. हम बताने लगते हैं जब वो मिडिल के पार हो जाते हैं. यदि हम बचपन में ही कोई बात उनको सिखाने लगे, बच्चे टीचर सिखाने लगे, ILBS वो छोटा है, ये सबके पास सब लोग की बात नहीं आते. स्कूल में सब जाते हैं. स्कूल के टीचर यदि नर्सरी से लेकर के प्राइमरी तक उसके शराब की कमियों को बताना सीखे, 2 फायदे होंगे कि उनके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगी सारी उम्र के लिए. नंबर 1. ठीक है, समझ गया. नंबर 2 वो बच्चे अपने माँ बाप को भी मना करेंगे, साहब ये नहीं करो. ये शुरू में सवाल उठाया कि स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, इट्स फ्रॉम द स्कूल. डॉक्टर सरीन तो है कि लोग अपने मेडिकल प्रोफेशन को प्रमोट करते हैं. ये तो कहते हैं कि आप पहले से बंद कराई तो हमारे पास कोई नहीं आए कम से कम. दैट इज द ऑब्जेक्टिव कि हमारे पास कम से कम लोग आए, इसलिए आप इसको फैलाइए. सेट प्ले करने का जब स्लोगन दिया है, आई मस्ट कांग्रेचुलेट हिम. ही द फर्स्ट डॉक्टर से कि मेरे पास मत आने दीजिए लोगों को, आप अपने घर के आके रोक लीजिए, प्रिवेंट कीजिए. तो जैसे बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बिग टास्क, because you're fighting a business, you're not fighting anything else, and this business is not going to stop. Only thing is we have to use Dr. Saab and others to tell the people कि आप जैसे सिगरेट हुआ, सिगरेट की कंजम्पशन सारे वर्ल्ड के अंदर कम हुई है because the picture, the kind of thing they were showing, literature they were showing, ban they were putting, similar ban should be put on alcohol. तभी होगा, जाकर दिखाएंगे कि अल्कोहल से कितने लोग विधवा हो गए, कितने बच्चे मर गए, कितने क्या हुआ. That kind of literature should be propagated to tell the bad side of this alcoholism. I think we have to stop it here. थोड़ा करके बहुत टाइम हो गया करने. Thank you. Thank you, sir. Thank you to all the panelists and sir. Today's program is the second edition of the Liver Health Summit by Integrated Health and Wellbeing Council, which is our partner for creating awareness of liver health. May I request IHWC CEO Shri Kamal Narayan ji to kindly come on stage. We would like Prabhu Chawla sir to felicitate Shri Kamal Narayan ji.
Now I request Shri Kamal ji to kindly address the gathering. थैंक यू एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो मेरे ख्याल से सुबह से हम लोग लिवर और अल्कोहल के बारे में बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे तथ्य सुन चुके हैं और ये भी सुन चुके हैं कि इससे कितनी ना सिर्फ स्वास्थ्य से रिलेटेड बल्कि सामाजिक बुराइयां और बर्डन भी है। मेरे लिए आज मैं अब बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक हमारा इसके बाद पैनल डिस्कशन और भी है सारे डॉक्टर्स का। तो मेरे लिए आज का दिन लिवर डे के दिन, वर्ल्ड लिवर डे के दिन, लिवर हेल्थ डे के दिन ILBS में होना उसी तरीके है जैसे कि क्रिसमस के दिन जेरूसलम में होना या जन्माष्टमी के दिन वृंदावन या मथुरा में होना, क्योंकि यहाँ पर लिवर हेल्थ को लेकर के सिर्फ इलाज नहीं हो रहा बल्कि डॉक्टर सरीन एक साधना कर रहे हैं कि कैसे हम लिवर, जो कि आप सभी ने सुना होगा, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रभु जी और हमारे पत्रकार बंधु जो और भी हैं यहाँ पर, मैं भी पत्रकार कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन उसका जो मैंने लक्ष्य थोड़ा बदल दिया और उससे स्वास्थ्य अवेयरनेस की तरफ कर दिया है। तो जो हमारा स्वास्थ्य का डिस्कोर्स है वो ज्यादातर समय हार्ट के अराउंड घूमता है। तो हार्ट को लेकर के अगेन जो मार्केट फैक्टर्स की बात आपने कही, सबको सफोला तेल से लेकर के और बहुत सारी चीजें बेचनी होती है, तो हार्ट के बारे में बड़े डिस्कशन हुए, जिगर के बारे में डिस्कशन कम हुआ है। और अगर आप सभी जाने तो ये भी कहते हैं, हम लोग आम बोलचाल में भी बोलते हैं कि भाई ये काम करने का जिगरा है आपके अंदर। तो जिगरा या जिगर उतना इंपॉर्टेंट है, वो ना सिर्फ आपको जीने के लिए सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम देता है, बल्कि कुछ भी जो शरीर को लाइफ सस्टेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो जिगर से आते हैं। तो जिगर मजबूत होगा तो जिंदगी मजबूत होगी और जिंदगी स्वस्थ होगी। तो हमारा ध्येय यही होना चाहिए कि कैसे जिगर पर भी हम वैसा ही लाइमलाइट ला सकें जो कि दिल ने ऑलरेडी उसको ले रखा है। मैं कई सारी बातें हुई हैं, इसमें से एक हमारा IHW काउंसिल हेल्थ को 5 हाई 5 ऑफ हेल्थ के तौर पे हम हेल्थ प्रमोशन और प्रिवेंशन को देखते हैं कि हर आदमी को, हर इंसान को गुड फूड, गुड एयर, गुड वाटर, गुड लाइफ स्टाइल और गुड हेल्थ केयर। और गुड हेल्थ केयर वो वाली हेल्थ केयर है जो डॉक्टर सरीन जैसे लोग दे रहे हैं, जो एक्सेसिबल है, जो कंपैशनेट है, जो अवेलेबल है और जो क्वालिटी भी है और जो अफोर्डेबल भी है और जो प्रिवेंटिव की तरफ भी ध्यान देती है। वो ये सिर्फ पर ध्यान नहीं देती कि मरीज देंगे, पहले 4 को लगेगा विंडोज में और फिर सफाई की जाएगी, वो वाली हेल्थ केयर जो प्रिवेंशन की तरफ ध्यान देती है। तो डॉक्टर सरीन आपको अगेन बहुत बहुत धन्यवाद ILBS की, आपने IHW काउंसिल को ये मौका दिया कि अपना 2nd लिवर हेल्थ समिट जो है आपके इस मक्का ऑफ लिवर हेल्थ में ऑर्गेनाइज की जा सके। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं क्योंकि आगे का हम लोग प्रोग्राम कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. On the occasion of World Liver Day, we had conducted a poster competition and we received more than 100 entries from all over India. So this competition was mainly for the school students as well as healthcare professionals. I would like our guests to kindly give the awards for these competition. For the healthcare professionals, we have 3 winners. Number 3 is Noor Hashmi. Noor Hashmi from MSc Nursing, ILBS. I request Srivastav sir to kindly give the awards, sir. You may see the posters outside. Number 2, the second prize goes to Kanika Joshi.
Again, MSc Nursing student from ILBS. Kanika Joshi. And the first prize goes to Khushbu Arya, MSc Nursing, ILBS. We have received entries from school students as well. Among the school students, the third prize goes to Ananya Bansal, class 11, Amity International School. Ananya Bansal. The second prize goes to Mantusha from class 12, Kendriya Vidyalaya. Second prize goes to Mantusha from class 12, Kendriya Vidyalaya. And the first prize goes to Jignesh Samantre, who is a student of class 3 from Loyola School, Bhubaneswar, Odisha. So it is unbelievable. You can see the poster outside, and this entry was received from Bhubaneswar, Odisha. And this young child of class 3 has won this first award and the beautiful poster that he has given. So this is entry from Bhubaneswar. He is not physically present here. Yes, sir. Thank you, sir. Now, may I please request Dr. Seema Alam, Head Operations, to kindly present the words of gratitude. In the interest of time and the fact that हमने काफी वक्त लिया है इस बहुत ही important एक subject पे बात करने के लिए, जैसे कि हमारे social partners IHWC ने कहा कि this is the time we have taken the pledge of prevention, and Dr. Sareen has taken this forward to take the pledge of prevention. I joined Team ILBS, which includes the director, who's taken this step forward, and also I think another important person here who's really worked hard on this is Dr. Mohit Vashni, who is a very important person here, and he is actually the psychiatrist with us who is trained in de-addiction. This is one of the few such trained health personnel that we have in this world and in this country, and I think we should utilize these people to work against alcohol-related diseases. This is will be very important. So Dr. Sareen and Mohit and our academic, our administrative machinery has been working to make this program a success. I should also thank Dr. Prabhu Chawla, Dr. Satyarthi, our media partner, Dr. Upendra Rai, I think I cannot see Mr. Kamal here, but IHWC has also been a very important partner for us, and our other social partners. The school, whether it's Heritage or Amity, or for that matter, the Jain School and the Jain Samaj, I kind of give my respects and the kind of compassion that Madam sitting here has shown towards, the anti-alcohol campaign. This is what we need, and this is how things will become better. Thank you. So on the occasion of World Liver Day, the mug was designed by our own Dr. Kanika Kaushal, and this is in memory of the World Liver Day, and what is safe for your liver, it is the coffee, and what is not, that is the alcohol. So I request if anyone needs this cup, it is available outside. So we thank you, Dr. Kanika and Metmo department, for arranging for the cups within a very short duration of time. And I also thank the judges of the poster competition as well, who have done a wonderful job. Thank you. Requesting kindly join us for high tea outside.
वही तो डर के चांस है ना, अहंकार और डर। आपको 10 दिन पहले बताइएगा तो सारे स्टेज को करेंगे, फिजिकल सेलिब्रेट आपके पास आएगी। हाँ हाँ, ये 10 दिन पहले आप लोग सर्कुलर भेज सकते हैं सभी 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे के रूप में सेलिब्रेट, बहुत बड़ा अभी हाँ वो आप बताइएगा। ठीक है सर, ठीक है। Includes adoption of sedentary lifestyle, diet along with an increased use of tobacco and alcohol in the society, create fertile ground for a spectrum of liver diseases in India. These changes result in an increasing number of alcoholic liver disease and non-alcoholic fatty liver disease as well, and a significant cause of other liver diseases in the country. The panel will discuss risk factors, positive changes in lifestyle to curb the growing instance of liver dysfunction. The session will be moderated by Mr. Kamal Narayanji, who is CEO of Integrated Health and Wellbeing Council. Dignitaries joining as the session as panelists will be Dr. S.K. Sareen sir, Dr. Govind Makharia, Professor, Department of Gastroenterology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, Dr. Anil Arora, Senior Consultant and Chairman, Institute of Liver Gastroenterology and Pancreatico-Biliary Sciences, Sir Gangaram Hospital, Professor Gaurdas Chaudhary, Director and HOD, Department of Gastroenterology, Hepatobiliary Sciences, Fortis Memorial Research Institute, Gurugram, and Dr. Rakhi Maiwal, Additional Professor, Hepatology and Division of Chief Liver Intensive Care Unit, Department of Hepatology, ILBS. Other speakers will be joining us virtually. Okay. Sir, it's a little far, but because it will become. So, Dr. Makharia, good morning. Morning. Good morning, everyone. How are Dr. Makharia, Dr. Arora? Yeah. Hello, Yeah. sir. Am I audible to you, doctors? So, Dr. Yes, yes. Gurdas Chaudhary, Dr. Gaurdas Chaudhary, Dr. Makharia, and Dr. Arora, good afternoon to all of you. Good afternoon. And so we are joining you from the auditorium of ILBS today, where we had a wonderful program, the second Liver Health Summit, a physical program also led by Dr. S.K. Sareen. Dr. Sareen would be joining us right here, in a moment. It was a great start of a campaign which ILBS and Dr. Sareen, along with IHW Council, have initiated called Play Safe, protecting liver from alcoholic use in youth, enhancing societal and familial awareness, and also initiating the campaign of IHW Council called
let liver live. So on this special occasion of World Liver Day, it's an absolute pleasure to connect with all of you, our esteemed guests, and some of the finest experts of medical field in the space of gastroenterology and also liver health. And so let me just quickly again, for the kind of benefit of our audience who are joining on our IHW Council platforms, give a quick introduction of our speakers today. We have Dr. Shiv Kumar Sareen, Senior Professor and Chancellor of ILBS, who is joining us here physically and who led a great program today. Dr. Sareen is a clinician, a gastroenterologist, hepatologist, a pioneer in clinical innovations and a gifted teacher, a medical entrepreneur, and an ambassador of enthusiastic learning. Professor Sareen was nominated to lead the Medical Council of India, MCI, as the chairman of the Board of Governors in 2010-11. And most importantly, he has been one of the most passionate, kind of proactive advocate of liver health, and has been instrumental in, kind of not only controlling, but substantially, decreasing the incidence of viral hepatitis in our country, leading several initiatives from research to policy to awareness. We have with us Dr. Govind Makharia, Professor, Department of Gastroenterology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. His clinician, he's a clinician of par excellence. His expertise includes clinical, kind of celiac disease, inflammatory bowel disease, and functional gastrointestinal diseases. My pronunciation of some time, these diseases may be little not on the spot because I'm not a medical doctor, and it's my passion to spread health awareness. So thank you so much, Dr. Makharia, for joining us today. Dr. Anil Arora, Professor Dr. Anil Arora, Senior Consultant and Chairman of Institute of Liver and Gastroenterology and Pancreatico-Biliary Sciences at Sir Gangaram Hospital. He is also patient-focused gastroenterologist and hepatologist with almost 4 decades of experience in managing liver health. Thank you so much, Dr. Arora. And also last but not the least, Dr. Professor Gauradas Chaudhary from the Department of Gastroenterology, Hepatobiliary Sciences, Fortis Memorial Research Institute, Gurgaon. He dons a number of hats. He is a gastroenterologist, medical educator, researcher of national eminence, as well as a columnist and philanthropist. So, and then we have Dr. Rakhi Mailwal with us, additional professor of hepatology and division chief of liver intestine care unit, Department of Hepatology at ILBS. So thank you so much, all of you, for joining us today. And let me just since this program was live and we have heard Dr. Sareen on that also, so let me begin with the other guests who have joined us, on this program of ILBS and IHW Council. So let me begin with Dr. Gauradas Chaudhary. Dr. Gauradas, we have discussed, a lot of aspects of what is impacting the liver health, the kind of burden we are seeing in our country and globally. And out of that, while viral hepatitis is something which we have, especially the, B and C, a lot of work has been done on that side. The 2 other major factors which are contributing to liver, diseases. One is your alcoholic liver disease or alcohol-associated liver disease, and the other one, non-alcoholic fatty liver disease. How do you see, the burden of alcoholic liver disease, since the whole, focus of today's program we kept on alcoholic liver diseases?
How do you see the burden of this increasing? And what are the important modifications as per you, which are important not only at a familial, personal, and social level, but also at the policy level? Very interesting. Thank you, sir. I hope I'm audible. I'm Is Dr. audible? Chaudhary connected? You are audible. Yeah, right. So that's a very Sir, we can see you. We can't hear you. Can you? Is it on mute? No. We can hear you here. Yeah, Dr. Chaudhary, I can hear you. Yeah. I think that probably the Dr. Chaudhary? Yeah, I can hear the other panelists. Is he on mute or? No, mine is not mute. Go to mute Huh? Mute में. Okay, so let me then in between, by the time, Dr. Chaudhary, can you get some help or unmute yourself? I'm unmute. I think the problem is at the other end, ILBS end, if that can be sorted out. Okay, we can hear now, sir. You can hear now. So that was a very pertinent question, sir, and it's a big honor to be here on the same platform with Dr. Sareen. Dr. Sareen was my senior at All India Institute, and I have learned so much from him. In those days, when the early 1980s, it was basically hepatitis B and C which was causing liver trouble, and a lot of patients died. We didn't have good therapy. Fortunately, over the last 30 years, hepatitis B and C with very effective therapy and vaccinations have almost gone, but it is now being replaced by what is called as lifestyle disorders. And I was listening with a lot of interest to the previous program, sir, which you were again part of, and I couldn't agree more with you that it's basically again attitude and lifestyle. And the fact is that alcohol, in our previous generations, hardly anybody drank alcohol. I mean, there were very few people who would possibly drink. But now you see there has been a pervasiveness in the acceptance and consuming of alcohol. So I think somebody mentioned in the previous program that let's go for a drink. That's what people often say. Whereas we need to modify it to let's go for a chai. And the pervasiveness has been very artfully and tactfully done by obviously the industry. I mean, let's not mince any words about it. The same thing had happened, I think, 10 years ago with the tobacco industry. And the industry lobbies are very strong. They have very subtle ways of marketing. And today, for example, I would be very surprised if almost in any college group, you would see about half to 3/4 of people having a party with some beer and drinks. So that has been the way culturally the acceptance of alcohol has grown. Now, Dr. Sareen would be the best to tell you that people who consume alcohol, about 10 to 20% of them have a particular type of a enzymatic, genetic enzyme, shall we say, polymorphism, which makes them more prone to the harmful effects of alcohol on the liver. So everybody who drinks once in a while doesn't get it, but you never know who's the person who's vulnerable. And therefore, we often find out in our alumni group meetings that about 10% have taken to alcohol in a big way, whereas most of them have probably tasted and got away. But that's a huge burden nevertheless. So the question is that how do you deal with alcohol? Yes, today I think that if you look at people with liver failure, they're almost equally distributed between alcohol-related injuries or liver cirrhosis or non-alcoholic liver disease. And that's become a huge burden on the society, on hospitals, on patients' families and their incomes. So that's a real major problem. And I do agree with you that, this is a thing to be reckoned with. And this has to be done at several levels. There has to be a policy issue. There has to be an awareness issue. There has to be campaigns, like what Dr. Sareen is leading. But overall, there are two approaches. One is a very kind of a prohibitive approach, but prohibitive approaches don't always work. But sometimes it has to be combined with a lot of awareness and attitude change programs. I have been a person of public health, and there are 3 words which we learn. It's called knowledge, attitude, and behavior. So knowledge is easy. Actually, almost every smoker or every drinker knows alcohol is bad. The problem is, how do you modify attitude? When you see somebody on the screen drinking and it looks very stylish, and behavior. When the peer group says, come, let's have a drink, how does one young fellow
decide that how do I stand out and say no. So these are much more deeper issues to be dealt with by, sir, your council and all of us. Thank you so much, Dr. Chaudhary. An important point, you have also kind of reiterated the fact which Dr. Sareen also highlighted during the program today, that the number of patients coming up with ALD or alcoholic liver diseases are almost reaching to 60% maybe of the total number of patients, and that's what you also highlighted, that the ratio of both alcoholic and non-alcoholic is almost getting equal. Let me go to Dr. Arora, Dr. Anil Arora in this point of time. Dr. Arora, at Sir Gangaram Hospital, as Dr. Sareen here highlighted that the way ALD related patients are increasing, and the same is also almost echoed by Dr. Chaudhary. What is the ratio you are seeing, and what kind of change in the pattern you are seeing there in terms of alcohol associated liver diseases impacting younger people and impacting more people than the previous? Yeah, thank you very much for giving this opportunity. First of all, I'm extremely grateful to Dr. Sareen and Dr. Chaudhary for having given me this platform, because both of them have been my mentors and teacher at the All India Institute of Medical Sciences. If you look at the proportion of the patients admitted in the liver disease all across the world, including India, especially the tertiary referral center, the major chunk of the diseases when we were studying under Dr. Sareen and Chaudhary at AIIMS were the viral related diseases, that is hepatitis B and C. But somehow with changing trend and with the tumulus societal changes, now the proportion has almost boiled down to 50-50 between alcohol and non-alcoholic liver disease. Both of them, as Dr. Chaudhary very eloquently put in, are lifestyle diseases. My biggest problem is that these are the diseases which are totally preventable. Alcohol is something which we know is the biggest cause of injury to the liver. And still we have more and more government agencies trying to sell alcohol. You leave the airport, the first thing people hog you like flies is the horde of all these marketing guys trying to sell you different brands of the whiskey because it tends to be cheaper at the airport. And we on our own do not set the examples to the society. We have an own meeting after we finish our conference, all of us will have a drink. So unless we as the cheerleaders of the protection of the liver disease and for taking care of the liver disease, unless we set the examples by ourselves, how do we expect others to follow these changes? Especially if after taking a lecture on alcoholic liver disease, most of the people are looking forward to having a drink. There has been a big societal change, and not only women, even the younger people have no hesitation in switching on to alcohol. Look at all parties, look at all wedding celebrations before and after that. I don't think there is any party which is complete without alcohol. This is the biggest, I think, slur on the society today, and we are trying to ape the West. There have been times, as Dr. Chaudhary said, then tea was equally good as a drink, or lassi was, or a buttermilk was equally good as a drink. But since we have a tendency of aping the West, so we are landing up in the same trap in which the Western world has landed up, that majority of our diseases are again related to the lifestyle changes. Unless we set the example and we be the role models, either in trying not to take alcohol or else trying to set the standards of maintaining our weight and trying to do exercises and lifestyle changes, I think it will be more of a lip service. Knowledge alone, as Dr. Chaudhary said, is not enough. Unless you make a change in the behavior and attitude, that onus lies not only on us, but also on the school education, as you had discussed in your previous excellent seminar, including the school teachers, that the very attitude of discipline, of understanding the issues of the liver, understanding the relevance of the liver, it has to be nurtured and inculcated right from the nursery class. It is just like, disease donor transplantation. If you tell somebody to donate your liver at the age of 60 years when he had never heard it for the last 6 decades, it will be just asking something which will be out of blue. So I think we will have to
nurture these good virtues of which our own Indian culture is so proud of. I feel so sad that we are drifting away and we are rolling down the wrong track. And this problem is not going to end irrespective of type of messages we spread unless we try to settle the societal issue, behavior problem in which parents, school teachers, and the society has to play a big role. Thank you so much, Dr. Arora. And I think that is where the program like this and the initiative and campaign started by ILBS and IHW Council, where today's program had children from multiple schools, youth from various universities, and I think that is where you are also highlighting that the message of how to kind of avoid this societal evil or something which is becoming a fashion, which is also kind of becoming a race, because what the youth of the today is also sometimes feeling that they use that word called FOMO, the fear of missing out. And when it kind of, this is something which is driving many of the youth. I think even the UGC vice chairman here highlighted the same thing, how in various meetings and parties, in conferences, seminar, word over, people kind of find themselves not fitting into that environment, and that leads to them to kind of start indulging into alcoholism, which may lead to this kind of issue also. Let me go to Dr. Makharia. Dr. Makharia, one of the figure which was quoted here also the National Family and Health Survey of 2021, which highlighted that almost 16 crores of Indians are consuming alcohol, which is almost 10% of the entire population of our country. And this is between the age of 15 to 75 for that matter, maybe. One of the important aspect which this survey also disclosed is that normally people who are living in cities and people like us, we feel that the drinking culture, the access to alcohol, some of the speaker highlighted the kind of glitzy showrooms and shops of alcohol you see in in urban kind of areas. Normally the perception is that the liquor usage is higher in urban places or urban centers, while the survey says that the consumption of liquor is higher both in men and women in the rural areas. You are sitting at the All India Institute of Medical Sciences, where the patients from across the country and especially the rural India come with the last hope to get the best of the treatment from a public health setup. Do you also see the same kind of pattern? Does that your day-to-day clinical work it kind of validates this fact, or you have some other kind of purview on it? I think first of all, thank you so very much for kind invitation, and we all salute Dr. Sareen and his team, who always keep everyone aware about the ill effects and how do you keep your liver healthy. Taking your question, there are two things. You take alcohol, as Dr. Chaudhary said, not everyone who takes alcohol develops alcoholic liver disease. That's one protection people take, that usko to nahi hua to mujhe bhi nahi hoga. And you protect yourself by saying so and keep drinking. So now we have two forces. The force number one, that there is a lobby who want to sell alcohol, and there's a lobby who wants to protect the society from alcoholic associated multiple diseases. The balance lie is in between, right? So balance will be in between, that what we call responsible drinking will be, I mean, if no alcohol, is fantastic. But if somebody is not willing to do that, then responsible drinking is one very important thing to follow. Yes, sir. Please continue. So one part is alcohol, but alcohol is not only one thing.
The second most important thing, which is now affecting society in much bigger way, is obesity and fatty liver disease. And alcohol plus fatty liver disease, both together in an individual, is a further worse. So the way our society is changing, that we are increasing alcohol intake, more and more people are getting that umbrella of alcohol use. I won't say misuse, alcohol use. And second, that they are getting obese. So both together is worse. So looking at both aspects will be one of the most important to do to decrease liver burden or liver disease burden in our country. Thank you, Dr. Makharia. Let me go to Dr. Maiwal. Dr. Maiwal, you know, for example, what we understood during the program today also, that sometimes stories work more than data. And, you know, people don't relate with data, but one story can move people. For the benefit of also our audience, who will be, you know, the general public, would you like to share some, you know, those some of those stories which you feel is as a, you know, the symbol of, you know, how very strongly coming out of it? Thank you so much, and thank you, sir. And I'm so grateful today to share the stage with all my teachers and seniors. So I handle a very difficult area, like you said, the liver ICU. And am I audible? Yeah. So, and there is not just one story which I would like to say. So the statistics, I would just like to say that at a time when I see patients admitted to the ICU, almost 40%, varying from 40 to almost 70% of the patients currently admitted to the liver intensive care at ILBS are due to alcohol-related liver failures. So these patients are young patients most of the time. They are in their early 30s, started their families, having young children. They come to the ICU. They have not realized it. So what we see most of the times in these patients is that it is the first onset of jaundice, and then they developed ascites within the span of 2 weeks, what we call that acute and chronic liver failure. So it happens in a couple of weeks that the patient lands up in 2 to 3 weeks time to the ICU, and the family is unable to understand what has happened. And then once they come to the ICU, we tell them that you need a transplant, but he's alcohol. So there are a lot of issues. You have to stop drinking because it's a lifestyle disease. So it's not about changing the liver. The new liver will also get, so there is a lot of stigma, and you need to have a live donor. So somebody from the family has to come forward. You have to manage the patient, make him a suitable candidate for transplant. So for that, they have to invest a lot of money. And many a times these families are all middle income, or they would have nurtured their finances or whatever over a period of time, which they spend in lakhs of money investing to get their patient out from the ICU, and they keep looking forward to us to save their lives, to get them forward. They don't understand what has happened, and the family just comes on the road in a span of 2 to 3 weeks. And these habits would have been there for a period of time, and from here you cannot start educating. So therefore, what we see every day is a lot of pain. The family, which is the bearer, sufferer, the doctors are the sufferers, because we do not know. The patient is young. Like what I'm saying is, either you go, once you have managed the patient, you have only two options. Either the patient gets better out of the ICU, and then he has a good life if he is abstinent and adopts a good lifestyle. But if the patient is struggling in the ICU and he's not able, the liver is not able to sustain, you have only two options. Either you take the patient for a liver transplant, or you keep continuing in the ICU, or you take a stopping route. So it's a very, very tough decisions for the family to understand these things. We always involve a psychiatrist, a de-addiction. There is a multimodal involvement of the nutritionist here, because most of the times they would also be nutritionally compromised. And we see that many a times that is the habits, and it's not just the impact of alcohol or the liver disease. There are a lot of other things associated, like we said, obesity.
There will be other things attached to that lifestyle problem to the patients, and that all will be understood once they land up there. Thank you. Thank you so much, Doctor. So let me come to Dr. Sareen. Dr. Sareen, during the program and also for the audience now, there has also been some of the points which I would like to understand, from a very layman point of view also. Like, for example, our veteran journalist, Sri Prabhu Chawla, he mentioned that the figures which we see of alcohol consumption in India is primarily the alcohol which is coming through a proper channel, from the kind of proper reported production unit. But there is also a big kind of prevalence of alcoholic beverages, or which are being we have seen the direct impact of them also, people dying of hooch, hundreds of or maybe dozens of people dying at that time. But he also mentioned that liver disease is not happening largely to those who are drinking the liquor which is coming from these big brands. Rather, they are causing or being caused by the liquor which is coming from non-reported sources, from illegal sources as well. How do you see that point also, and what would you like to clarify in a way for the audience? That is that because this is also a growing perception among especially the higher middle class or upper classes, that if they are drinking expensive alcohol, that does not damage their body, their organ, not that unhealthy as a cheaper liquor can be. What do you say on that? Yeah, that is a concept, I think somehow by the industry or by the people who sell alcohol. And it has gone into the minds of people, unfortunately. Today, there was a recent survey in the US. In the school children and college, 83% have either tasted alcohol or are drinking alcohol, and 8 to 10% are using heavy alcohol, and this is up to the age of 25. They are not getting the country liquor there. They are using the liquor which is made maybe the best in the world, top of the world. Yes. So if that was true, why should an American or a European get that? In Germany, 20 times more increase in alcohol Actually, it is the amount of alcohol in a drink that makes all the difference. Say, for example, the pure whiskey, it has about 40% of the total weight is alcohol. So 100 ml means 40 grams have been drunk. And by any standards, this is too high or so. So I think at first I would like to say, dispel the myth that quality of alcohol, high money price protects. In fact, there is another data that more deaths occur now in the wealthier people than in the poorer people, deaths. And as Rakhi also said, and I think Dr. Makaria and others also mentioned today, and we published this on a series of about 1,000 patients. If somebody has diabetes or family history of blood pressure, heart disease, or person himself is obese, then a smaller amount of alcohol for a shorter duration, just about 7 years or so, can produce more severe liver disease. So if you are born in a family with obesity, diabetes, hypertension, cardiac events, kidney disease, such a person is predisposed with a smaller amount of alcohol, be rich or poor, and gets more liver disease. And that liver disease is severe,
We see patients coming in the age range of 25 to 35. The number of women we never used to see has just skyrocketed who come with alcohol and liver disease. So I think the society has undertaken a huge insult due to alcohol under some myths, and it is a misnomer कि मेरा mood अच्छा होता है. Actually, alcohol is a depressant. It's not a suppressant. Is a stimulant. Yeah, it depresses your inhibitory things. कि आप अपना inhibition छोड़ते हो तो आप ठीक हो जाते हो. ये गलत फहमी है कि alcohol is a mood elevator. It is actually an inhibitor of your inhibitory brain. So I would clearly say we are on the wrong path, and through you, Kamal, you are a partner to our mission. Through you and your IHW Council and all my worthy colleagues, we must clarify this, that we are not doing the right thing by promoting or accepting alcohol. It's it's actually a syndemic. A syndemic is what is a society, economics, and health. All put together is a term called syndemic. So I think alcohol today is a syndemic much bigger than any pandemic. Thank you, Dr. Sareen, for kind of dispelling this myth, which is fast growing up in our society. Dr. Chaudhary, another important myth which is coming up, and whether it is myth or whether it is Dr. Sareen has very clearly highlighted that if you are born in a family of kind of certain risk factors, or you yourself have certain risk factors, you may be predisposed to such diseases, and even a smaller amount of alcohol may lead to the liver problems. Many times it is also kind of when it comes to regulating or controlling alcohol, many times we also come across those advisories or those medical findings or whatever it is called, that you will give a better name to it, that a certain amount of alcohol may not be injurious to your health. How do you see that, and what is the message you would like to give to the public, that how they should kind of control, and why they should absolutely quit alcohol for the sake of healthy life and liver? Very good question, but very deep question. So let me try answering them. I think what Dr. Sareen mentioned, I think all of us agree that if you have two types of injuries occurring to the liver, one is alcohol and the other is non-alcoholic fatty liver, that is, which occurs with lifestyle disorders like diabetes, hypertension, obesity, then the two of them join hands and cause much more damage in a shorter period of time. And that there is no doubt about that. And that is what is actually quite common. Many people may deny the history of alcohol, but they are the ones who go super fast in their downhill course. With regard to the second issue that you raised about the alcohol, your question was about family history, and how much alcohol is good and how much alcohol is bad. Question is that there are perception that a certain amount of alcohol is not that injurious, because Dr. Sareen gave a very good kind of imagery for that, even if you cross red light once, it can be fatal or it can be dangerous. Yeah, I agree with you. Now, you see, what happens is the audience is a obviously educated audience. So let me tell you what happens. These surveys are actually done by taking people, say 20 to 30% who have drunk a lot of alcohol, and many who have drunk but who have not developed liver disease. And then you try to kind of develop a mean. That is, if this is the amount of alcohol that has been consumed, we find that the amount that the liver injury seems to be more common, or this is the group of people. There is a basic fallacy in that, and I'm sure Dr. Sareen will come in on that. The way liver metabolizes alcohol is extremely variable. It depends on a particular enzyme called alcohol dehydrogenase, which has got several polymorphisms. And that is the reason why
The problem is you can never predict initially whether you are going to be in the vulnerable group. And when I say vulnerable group, there are two types of vulnerability. One is the addiction vulnerability. So, if you give alcohol to say 10 people, 1 or 2 will be addicted to alcohol. So you don't know whether you would be in the 1 or 2 or you would be in the 8 or 9. So that is one part which we don't know. And the second is that if you start taking alcohol, what might be mentioned as a safe dose may not be safe for you if your enzymatic background is such that you go down pretty fast. I mean, we have all seen, I think Rakhi also mentioned that we see some people with relatively small amounts of drinking, but they come with decompensated liver disease. Now, since it's a individualized problem and we don't have an answer to that, very clear answer, I think it makes practical sense to say that, look, let's just keep off alcohol. I mean, I might just tell you here one more thing. When many of us, I'm sure Dr. Sareen does much more, when we go to certain countries where alcohol is religiously forbidden. Okay. So in those countries, we hardly ever see alcoholic liver disease. They have other diseases, but not alcoholic liver disease. The only problem is that if you have a very strong government policy of banning, most of the people in those countries want to actually take a visa and go to US or to Western Europe because they want freedom. So this is a catch-22 situation. I mean, I don't have an answer. I think that I would leave it to you and Dr. Sareen to say. But again, in the Second World War, it was shown that when there were reasons for which alcohol was banned in France because the supplies didn't come, the alcoholic liver disease and deaths actually fell. And after that, when they rejoiced after the victory, it again went up. So this is well known. There is no clear formula to say this much is safe and this much is unsafe. And therefore, I think a prudent thing would be to say that, look, let's just be off it. I think much of what we need to do as a society is to learn from the tobacco program. You see, the tobacco program in the 70s was very popular. I'm sure many of us also, when we were young in college, we smoked. But, thereafter the data came out and there was a huge amount of anti-lobbying because the tobacco industry was very strong. And there was a huge amount of effort taken to change the attitude of people and perception that tobacco is indeed bad. And now if you see Western Europe and particularly America, in the last 5 to 10 years, there has been a dip in smoking rates. This has been well shown. Now, for alcohol, we are still on the upswing because, I don't think that we have got that kind of messaging that has come in, that kind of awareness that has come in. So most people feel that, having a few drinks would be fine till they get hooked. Thank you so much, Dr. Chaudhary. An important aspect, and I think you have also clarified for our audience that, you don't know what is your risk factor, and you may not get to know it, before you start drinking. And you may only get to know about it when you might have already started damaging your very critical organs. So it's better to say no to alcohol rather than going with the thoughts of how much is okay and how much is not. Let me go to Dr. Arora. I might just add that by the time you come to know, you might have got so hooked to it that you can't come back, and that makes it worse. Yes, so that is also an important aspect that it's better to stay away. Dr. Arora, Dr. Chaudhary also highlighted about it that I think we are also looking at that when it comes to alcohol, there is not those kind of policies regulating it. We do see that most of the alcohol bottles these days have a symbol saying that not for pregnant women. When it comes to advisories related to health, and especially which we have seen in the case of tobacco, where most of the country across the world have adopted strong advisories, India being one of them.
this is not being seen in alcohol. Rather, alcohol is being sold in a most glamorous possible way. One of you also highlighted, and that's a big, I think, irony, Dr. Sareen, that the moment you enter to places like international airports, I think the 70% of the space, commercial space, is occupied by the alcohol, and with the best possible designs in size and shine of the bottles. How do you see, Dr. Arora, should the medical fraternity, the people around, the health advocates today, that even the doctors, because when you talk about the social element, evils of alcohol, people may tend to ignore sometime. But when you are talking about their health, and this is something which is, and post-COVID scenario, we are seeing people are getting more conscious about health, though there is the irony of that the alcohol consumption has also increased. But I think the people are more receptive for health messages these days. Do you think that with the strong awareness from medical fraternity, from doctors, from medical professionals, and across the specialty, not that a hepatologist or a liver expert only need to tell, and alcohol is one of the risk factor for almost most of the NCDs. How do you see that the whole medical community can lead this campaign and make a better regulatory framework around, or lead to better regulatory framework around alcohol availability, distribution or uses? Yeah, I think Kamalji, I think what most of the panelists have already clarified and reiterated, that the best thing is no alcohol. This myth that small amount of alcohol can be useful has been perpetuated by some of the cardiology fraternity with no good evidence to support that. And as of now, if you can do without it, that is the best thing. If the second message which is important for all the stakeholders, including the general public, is that liver by default is a very tolerant organ. So there is nothing it will complain till it's really down to more than 85% of its dysfunction. So first time you come to know that your liver is bad in the form of development of jaundice, fluid in the tummy or swelling in the feet, then it is too late. By that time, possibly you have missed the bus. So since it is a big complainer, it is extremely important for us to realize that even if we are not having any symptom, that doesn't mean there is something brewing inside. A volcano may erupt anytime. The liver is getting damaged slowly and gradually. That is the worst part of it. And it is not uncommon for us to see, I think Dr. Sareen will reiterate, that patients with advanced liver disease, first presentation may be just hepatocellular carcinoma. That means till then, nothing was present in terms of symptoms. So this, unless you have a regular checkup. And thirdly, so far as the government keeps pushing in the alcohol sale, and I'm sure government is a partner to that, in terms of giving schemes like buy one get one free, or opening the different number of outlets. And if you look at the data, 573 new outlets have been opened up in Delhi, and I only read yesterday, I think that we are likely to have this number increasing to around 800. If the outlets are increasing, if you are trying to decrease the duty, if you are offering buy one and get one free, how will in knowledge alone, as Dr. Chaudhary very rightly pointed out, how will that be sufficient? I think if we have to do some good service, the government has to step in. You have to make some effort rather than learning, as Dr. Chaudhary said, that 50 years down the line that tobacco was bad. If today we know alcohol is bad, then why do we continue to sell? I think we have to make them equal good partner. And what bigger man than Dr. Sareen himself, if he can step in, I think we can make a drastic and evolutionary change. Wonderful. Thank you so much, Dr. Arora. Dr. Makharia, a quick one for also those who may be having patients or people, having liver-related issues, or maybe at kind of risk factors, and they may need to kind of take additional care, extra care of their liver. What would be your, few pointers to, kind of take care of their liver? I think that, again, the three most important thing that alcohol, no doubt, is very important.
don't take alcohol. If you take in moderation. And there's no definition of moderation. There's no definition, number one. Number two, that look at your weight is not increasing. Your weight is under control. And physical activity. The three most important things which protects liver are essential, and the good evidence that if you do all three of them, you protect your liver to a large extent. Again, I want to reiterate the point Dr. Arora made, one, that every organ of our body has a huge capacity, and they don't become symptomatic unless they are damaged to far extent. And once they come to us as a patient, we have nothing to offer. We have nothing to offer except for palliation. If they're bleeding, we stop bleeding. If they're fluid in tummy, we give drugs to control that. For pancreas, for small intestine, for brain, we don't have a marker. For liver, there's one marker which can tell that liver damage is going on. Therefore, we somebody get attention and then work around it and try to. Experts also today said that, the kind of campaign you led in the space of viral hepatitis was, I think, remarkable and seminal in its impact. How do you see this big mission which you have taken up, which is not only kind of some where you can do by doing one aspect of it, which is something much more comprehensive, much more collateral in that way. What is your vision for maybe next a few years to kind of lead this mission of not only reducing the alcohol uses or consumption, but also making liver health as something which is the priority for every individual, and which we have, and I have alluded to that also, which we have seen in the space of heart. Liver has not got its due importance till the time, and maybe because it does not give so symptoms, it has not got that importance when it comes to the overall health priorities of not only, I think, for the individuals but also for the nation. Yeah, thank you, Kamal, and I would like to gratefully acknowledge the valuable things Dr. Gauradas Chaudhary, Professor Anil Arora, and Professor Makaria, and my colleague Rakhi have said. I want to put 3 or 4 things before I give the vision. First, a patient who comes with severe alcohol-related liver disease is worse than cancer. Cancer guy can survive few months or few years. But this guy with severe disease, with a jaundice, 40% will die in 4 weeks. People don't understand. They have mild jaundice and they say, साहब हम वहां गए थे, डॉक्टर साहब ने देखा पर वो तो बच्चा नहीं, साहब पीलिया बढ़ता ही गया. ये वो वाला jaundice है जो ठीक होने का संभावना कम होती. The patients come when you can't do a thing. It is worse than cancer. So then your heart bleeds, sir, what can I do? You can't even transplant because he has been drinking till yesterday and there is nobody. So first is the pain. The whole medical, at least our specialty people feel the pain, the pinch, the worry and our helplessness. The second part, this is WHO data, that we will be decreasing the life expectancy by 1.3 years. Every year we think life expectancy should increase. But alcohol alone will decrease the life expectancy by 1.3 years in the times to come. Third, in India, in last 1 decade, the increase in alcohol consumption has gone by 60%. Now, if that is a problem of society, what can doctors do? Me, my colleagues, we all will join in just through you and similar fora, explain to the people, look, don't jump the red light.
Be aware to stop at the yellow. Don't try and test your luck every day. The simple solutions in my mind are, and for the mission, is to say, okay, one day a week I would drink if pressurized by my colleagues, and not more than a drink. And more than a drink is not the famous Punjab drink. I will not name that, but it is maximum of 8 grams of alcohol as grams are concerned. So people from media and from others, they always say, साहब कितना पी ले फिर भी हम लोग इस फंक्शन में इसलिए आना चाहते हैं कि ये बता दो आप कि हम पी करके भी लिवर को कैसे हेल्दी रखें. You can't have your cake and eat it too. You have to understand. Number 2, I would like to say government and society should have some kind of limits to say, भाई ये ज्यादा वाला अल्कोहल कंसंट्रेटेड है, विस्की है, ये नहीं मिलेगा आपको. 5% वाला अल्कोहल बाजार में मिलेगा, 7% वाला मिलेगा, 40% वाला नहीं मिलेगा. अगर हमको जैसे ओपीएम है, आपकी मॉर्फिन है, ये एक लाइसेंस है कि ये हर आदमी नहीं, अस्पताल में स्पेशलाइज्ड ग्रुप ओनली कैन यूज इट. वी नीड टू हैव सम पॉलिसीज वेयर वी कैन से दिस brand or concentration and this amount of alcohol, the volume and the concentration beyond which will not be applicable, available to the people in large, I think is a simple way of, this is my thought of handling it. And the third, and more importantly, the alcohol related other problems. One is liver, but the roadside accidents, the problem of harmful effects like suicide or society problems. So I think I would like to show through this mug, which our team Kanika and Gaurav created on this World Liver Day. It has your symbol of second World Liver Summit. And this has 2 simple messages, and through this I want to make a change. And this change is, say yes to coffee. Can you focus on this? Say yes to coffee and no to alcohol. If you keep this mug, and I'm sure if I give this to Gaur or Anil or Govind, they will enjoy their coffee. They all are coffee drinkers, which takes away the fat and the injury from liver. So say yes to coffee and no to alcohol. I have no stakes in any of the coffee plantation. Thank you, Kamal. Thank you so much. And certainly, sir, we are all committed to that. And as you said, on a lighter note, it may be say yes to coffee or tea, or maybe for that matter, Nibu Pani, but say no to alcohol. So wonderful to hear all of you, and some very interesting suggestions also coming from all of you. The message for the people today is that your liver, your jigger is living for you every moment, and it is not that we should live for liver or should talk about liver only once in a year. Every moment, every decision of ours, how we eat, how we live, how we move, how we live our life, should also be conscious about the health of something which is the source of life for us. And for that also, as Dr. Sareen also mentioned about Let Liver Live campaign, they are also taking the suggestions from today's program. Dr. Sareen, we would be starting under your guidance and with the help of all our experts, Dr. Chaudhary and Dr. Arora, Dr. Makharia. I invite all of you to help us build that initiative of Let Liver Live League, and to bring together not only medical experts, because this is not just a medical problem, include the spiritual leaders, the motivational speakers, the journalists, the influencers in the society, politicians, policymaker, everyone who can come up
and kind of get committed to this cause that we want the liver health of the people of our country, of our nation, and the world should be protected and promoted. So thank you so much with this thought, and I wish you a great World Liver Day, and every moment a great liver health day to all of you and to all our audience today. Thank you so much. Thank you. Thank you. काम कर रहा है तो कॉपे उठ रहे हो so जब आ जाओ बाउंड्री that after the talk about the let's get all the